सर को तो बुला दो। सर कहाँ है भाई? सर आगे तो ऊपर भेज दो, वेरिफिकेशन बाद में। स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट करना यार, ऑल इंडिया स्टार्ट। हेलो हेलो। Good afternoon, students. Good afternoon, girls. Welcome to all of you. I extend my heartiest welcome to all of you on behalf of Central Board of Secondary Education, Chairman CBSE and Joint Secretary Academic in the Udaan Project Academic Session 2015 and 17. Warm welcome to all of you once again. And to all the girls who would be joining us at other 59 centers throughout the country. So let us start the Udaan Academic Session 2015-17 from today. Well, girls, I just want to give you a small introduction to what Udaan project is. The purpose of Udaan project is to facilitate the girl students who are from economically disadvantaged background to prepare themselves for the engineering disciplines. It has been observed that there is a less ratio of girls who are joining engineering discipline. The Honorable HRD Minister desired that this ratio needs to be addressed, and she launched this project Udaan to mentor the girl students to prepare themselves for the engineering discipline. The purpose of this project is also to enrich the learning of science and mathematics in your senior secondary school.
So with this objective in mind, to address the lower enrollment ratio of girls, this Udaan project was launched by the CBSE under the aegis of Ministry of Human Resource and Development. Well, under this project, there are few components I hope I'll share with you. These are the various dimensions of the project. The CBSE will be providing you academic support by an online format as well as by offline format. In online format, we will be providing you with weekend online contact classes. These classes will be broadcasted to all the 60 centers throughout the country. Besides this, we will be providing you there is an Udaan helpline portal, there is an Udaan website. All these features will be available to you. The board will be giving you one unique roll number and ID and password. So you can by registering yourself, we will be sharing with you your unique roll number. What you can do is you can log in with that roll number to the Udaan website, to the helpline. And from the helpline, you can raise your queries of academic nature and non-academic, that is of logistic nature. So, well, girls, we have our honorable chairman CBSE. Sir, we heartily welcome you to the first orientation session of the Udaan class 11th academic session 2015 and 17. Kindly bless our efforts, sir. So, girls, so there will be what you say. So there will be an Udaan helpline. Udaan helpline, you can register yourself with the login ID and password, which we'll be sharing with you. From there, you can register your queries. These queries can be of academic and non-academic character. Academics, if you are facing any numerical problem, you are not able to solve your questions, you can register your queries, go on helpline, register your queries, and solution will come to you. Similarly, for non-academic problem, if you don't have a SD card, if there is a tablet problem, if there are other problems, you haven't got a textbook. So all those problems will be resolved by us, by a team which is here, and this team will assist you in all your academic and non-academic aspect. Right? Girls, we will also be sharing with you Udaan tablet will be provided to you. In this Udaan tablet, we will be providing you SD cards. These SD cards will be having video lessons which will be mapped with the JEE entrance examination syllabus. So you have in a tablet all the study material which is required for preparing for JEE, IIT Mains and IIT Advanced, right? So that tablet is mobile, that is always available with you. You can see at your convenience at any point of time, any lecture, whether it's from physics. In physics, subtopics are there, so you can directly go to the topic, subtopic which you want to study at that moment of time. So this will give you enhanced mobility in learning, right? Is it clear? Besides this, we will be providing you textbooks. The Udaan textbooks will be provided. These textbooks will be containing lessons as well as practice questions, solved examples, solved questions. So you will have an offline format as well as online format for learning, right? There will be a schedule which will be shared with you. This will be a weekly schedule. What is required from you is you will prepare yourself for the coming weekly classes, the topic which has been provided to you. That topic on weekends, we will be having a weekend contact classes on Saturday and Sunday. On Saturday, the timing is from 1 p.m. to 5 p.m. and on Sundays, it is from 9 to 3 you will be having classes, and from 3 onwards for 1.5 hours, we will be having an assessment examination with you. That assessment examination we will be conducting online on the tablet. The questions will appear in your tabs and you have to just submit your answer after solving the question. The result immediately, once the final result is submitted, by you, the result will come on your tablet, how many questions you have attempted, how many you have done correctly, and what are the wrong, as well as the solutions. What was the solution of those questions will also appear on your tablets, right? There will be practice questions, there will be mock test as well.
all those will be available in your tablets, right? So you have a various dimensions of academic supports which will be available to you as well. Now, weekly contact class is a very important dimension of this project, because at this point we have a very learned faculty which will be directly interacting to you through online AView system. This will be broadcasted at all the 60 centers throughout the country, and this they will be going through the topics and solving problems which will be of nature and type which will be equivalent to the toughness as you encounter in IIT JEE Mains and IIT JEE Advanced. So please take these online weekly contact classes if you are in centers, other 59 centers, very seriously. Please come for your classes. Make sure that you are there, because in these classes, the type of problems, the experience and the peer learning which will occur will help you in cracking the IIT JEE examination. With this, I wish all of you very successful stay with us for this 2 years. You will continue with this program. In the next year, you will be shifted to class 12 and we will have a new intake. With this, I hope all of you will make a grand success and show very good result, and you will be a harbinger, sanitizing a social awareness that other girl students also are motivated to take engineering as a discipline. So set a good example that other girls who are interacting with you, who lives in your neighborhood or who are in your school, also are motivated to go for engineering disciplines. Thank you very much. Well, sir, now girls, I'll welcome Director Academic and to please say a few words to the girls on this program. Thank you, sir. Good morning to all of you, and a very, very hearty welcome to all present in Delhi Center as well as in the other centers in the country. And Mr. Chaturvedi has given you a brief about Udaan, and later on, Ms. Monica Kapoor also will give you an overview of about the project, how it functions, and what are the help that you will be getting through CBSE, the staff as well as the experts that we are going to involve in this project. Okay, but one thing that I'm quite happy to see that the attendance is quite encouraging today. First day we had some apprehension that whether you will be coming or not. So I really congratulate you for getting selected and also being with us. And I found some of you are coming from quite far places, and you are quite happy about coming and attending the classes, though the distance doesn't matter for you. So I'll be just telling you only 2-3 things. See, in life, things do not come to us in gold plate. We have to struggle. Okay, and you have now taken up the principle of struggling and achieving things. So it's said somewhere, you know, interest is the mother of attention, and attention is mother of retention. So if you want to catch the grandchild, you have to catch the grandmother, they say. That means interest in the work that you are doing always. That is very important. Then it leads to attention, that you pay attention to what you are doing, focusing yourself. Then that attention leads to retention. You retain whatever you have learned and you use it whenever it has to be used properly. So this is very important. And when you come to this, you must have seen what we call as the bullseye in archery. You have seen the archery, there is a bullseye. So where the archer focuses, he focuses that dot. But when the practice starts, what happens? It will be falling this way, that way, far away from the dot. And then through practice, what happens? It comes nearer and nearer and nearer. Then you are able to hit the bullseye. So that it is not that without any practice and without making effort, we would be able to achieve things. But through practice, through hard work, through tenacity, and one-pointed focus that we have to achieve in life, we would be definitely able to do it. You have to prepare. That's what I want to tell you. You have to prepare yourself for enjoying hard work. This is the simplest thing I want to tell you. That is enjoying the hard work, because we are afraid of hard work. You know, बहुत काम करना पड़ रहा है, वो नहीं है.
once you start enjoying it, you know, the amount of time you put in, the struggle that you do, everything becomes an enjoyment for you. Then the result will be automatically good for us. That's why through hard work, we can attain anything in life. And then you have to have certain study techniques also, because some of us do very much hard work. A lot of hours we put in to study, because we meet parents who come to us and tell that हमेशा पढ़ते रहती हैं but marks नहीं आ रहा है. This is a normal complaint that the parents tell us always. Very much always studying. But productive study is very important. That you are putting half an hour or 45 minutes when you sit and introspect or meditate upon what you have studied in this 45 minutes or 30 minutes, whether it is really gone in, that is important. Not that simply sitting and eyes or looking at the book and we are somewhere else. That happens. We go on a mental excursion, we call it, you know, we go on outside. That should not be there. That's why phased study we call it. That is phasing. So 20 minutes, then introspection, then again 20 minutes, then relaxation, then 20 minutes, like that. We don't recommend, that is normally in study techniques, we don't recommend for a very long hour of study, sitting for 3 hours continuously, because you will not be able to do that. That is why the phasing you take up, phase it and do it. And then note making is another important thing. We should not be afraid of writing. Whatever we are reading, we have to make notes of that. Then we call it as spiral learning. That is revisiting the concepts. Because we forget sometimes, you know, what we learn. We say that मैं सब पढ़ती हूँ तब उस समय याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि you are not revisiting the concepts. We are not revisiting it. Even if you are not seen your friend for a long time, you forget the name of the friend, you know. But if you are keeping in touch with them frequently, you remember the name. That is how the study also goes. So the revisiting of the concept is very important. Phasing में once in a week or twice in a week, you just go through the concepts that you have studied and come back again. So then what happens after 3-4 attempts, that will be permanent learning for you. You will not forget anything. That will be permanently remaining in your mind. You will not forget it because of familiarity with that. And second thing, this getting by heart, rote learning is another problem. You have to understand things and assimilate it. As far as possible, understanding the concepts, understanding the content is very important. Then rote learning. Rote learning will definitely make you to forget things. The reason being, on the day of examination, you are on intention. Normally, you are intention. You must have seen children reading the books outside the corridors. वो पापा उनको बाइक में छोड़ने के लिए आते हैं एग्जामिनेशन हॉल, बाइक में भी बैठ के पढ़ते हैं. Is it a place to study? Sitting in a motorbike is not a place to study. We have to study before that. That is why these are simple tips I have given you. In our remaining meetings, I'll try to talk to you more on the study techniques and all these things. And welcome once again, all of you. And we are quite happy to see you all here. Thank you. Well, girls, now I'll request Honorable Chairman CBSE to say a few words and to bless our efforts and endeavors so that we succeed and all of the girls who are the participants of the Udaan program make to IIT JEE. Sir, please. Good afternoon to all the girls in all over the country. I think we have around 60 centers. And let me welcome you. Today is the first class we're all meeting. And you have gone through a rigorous selection process. About 633 girls have been selected for this batch. And let me tell you that I don't know if they have run you through the earlier rounds. Last year, it was a decision by our Honorable Minister, Mrs. Smriti Irani, to take up, because the number of girls in the premier engineering colleges, the figure is not too high. So we thought we should give them a helping hand.
so that they can get into the things. Last year, I think there were about 359, and we could start only maybe in September, October, and that was in the final year of the class. And we did have good results. I think about more than 120 have got into premier institutions, and the second batch I had the pleasure of meeting last Saturday. And now we welcome you here. And I think in all the centers we are having all over the country, we have started off this class. We could only give you the messages to you maybe only about 4 days back. I'm happy at least there's 90 buttons here, and I guess in the other schools also, we're having at the centers. But let me tell you one thing, this is a good opportunity for all of you. This is a good opportunity, and you may have the opportunity because the CBSE has decided to take up this, and the teachers, the faculty would be no less than any other private coaching classes you would be wishing to attend. This is completely free of cost. They will be giving you all support. We have our backup team who are 24 hours. They're ready for your messages. As you go through our program, you will appreciate the thing. Please feel free to be in consultation with them. I know Saturday it is for some girls, it is difficult to come from slight distant places. I know, but your parents are with you. And since your parents always are dreaming for a better future for you, and we all know that once we, all of you are from the Jawahar Navodaya Vidyalayas, Kendriya Vidyalayas or government schools. We have, as per se, this batch does not have any batch from the private schools. We have essentially want to select the girls from the government schools. So I wish you all the best, because one thing we should understand is that now we have 2 years and there is nothing you cannot achieve without hard work. Hard work is definitely needed. But at the same time, what Dr. Rao has told, only hard work does not help. Okay, it is 90% hard work. There's also a book where you should read, is that work smarter but not harder. So you should know which subject, what topic. It is not that you are just going rote in all. So you have to be smart on to selecting what you need to absorb also. Working smarter and hard. Working hard is good, but there's also work smarter than harder in this thing. So I wish you all the success. I'll be with you. I'll be monitoring with my team. We'll give you all support. This is to all the children all over the country. Maybe we wish you all the best. This is the first day. Enjoy yourself at the same time, what you're doing. And there is nothing you cannot achieve, because the world is, once you get into any of this premier institute, the world is at your doorstep. You can actually achieve anything. It need not be that you will never feel disheartened. I know I have 2 good friends who could not get into the premier institutes, but they've got into different engineering colleges. They are running now they control the biggest software companies in the world. So it is not necessary. It is not just getting. So the world is open to you, the more hard work. And we from CBSE wish to give you, this is the first day, and let me express again to all of you the best of luck and wish you a bright future. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging words. Well, now I invite Monica Kapoor, Joint Director, to elaborate the entire project. How will we be going about this academic session? She will explain you the entire project, the entire aspect, expectations from you, and what sort of support we will be providing you. Welcome, madam. Heartiest congratulations to all the students present in Delhi Center, as well as the students who are in different center looking this program. I just want to make you familiar with the whole aspect of Udaan project. But before that, I just want to wish you that I know everyone's dream is to become an IITian now. Really? Okay. Wish you best luck.
And to everyone looking this program, I wish you all the great success in coming in this project. Let's make you familiar with all the aspects of Udaan. So we will start. Welcome you all. And our program is to give wings to you. We just want that you must have wings and you fly in this project and you get success. Introduction. Udaan is designed to provide a comprehensive platform to you girls, you are the talented girls, to aspire to pursue higher education in IIT, NIIT and other centrally funded engineering colleges and provide academic support to prepare for entrance examinations. Our aim is to envision to provide opportunities to girl students so that you can be selected in these colleges. Next. Let's discuss the objectives of our program. To address the challenge of lower enrollment of girls. Do you agree with this? Like girls enrollment in engineering colleges is very low. Boys used to come forward, girls are very low. So our objective is to address this challenge and we want that more and more girls should pursue this engineering course. So this is our objective, and to enable girl students from disadvantaged sections. We know that so many girls are not selected because they are not able to pursue maybe a financial problem or something more. So we want that girl from disadvantaged section, but they are talented. So they should come forward and join our hands. To minimize the gap between curriculum intended, curriculum taught and curriculum learned at senior secondary level, as you are going to learn this. And to enrich and enhance teaching of science and mathematics at senior secondary level. So these are our objectives we are going to follow. Let's come to the salient features. Availability of tutorials and study material. We will provide you the study material. As you are seeing, these are the study material. We are providing you for the 3 subjects, physics, chemistry and mathematics. We will provide you this study material as well as tutorial classes would be there. We will be providing practice question, and most important, because as sir has mentioned that online contact classes would be there, virtual classes would be there. So we will be providing you this tablet. This tablet will be given to you, and in this tablet you may be having all the study material, soft copy of this study material, NCERT books, practice questions would be there. Even availability of helpline is also there. You can put your questions, your queries. I will just tell you that by going to online, and we will see that process also. Okay. Later on, I will tell you how to follow the helpline, how to put the queries. I will tell you in detail. Okay. So one of the feature is of providing this tablet to you. So video lectures are prepared in physics, chemistry and maths, and all the video lectures would be here in this tablet. If you want to go to the chapter, specific chapter, if you want to see the video of that, you can go to that video. Link is there and you can open that video. So video lectures would be there, and this is to facilitate all your learning. Tablet is there. Peer learning and mentoring opportunities for meritorious students. आप सब लोग meritorious students हो, and we will provide you opportunity. So see, peers, girls are there. You all are coming from different areas. When you will interact with each other, you will get an opportunity to learn more. So we can conduct classes and online assessment designed to provide useful feedback. Saturday and Sunday classes are there. On Saturday from 1 to 5, and from for Sunday 9 to 4:30. In Sunday, we will include assessment, and sir has mentioned you about the detail of that assessment also. Dedicated toll-free helpline. You just write down this number in front of me. Just open your diaries. Write down this number. This is 1800 11 7542. This is toll-free helpline number. No charges would be there. So you can call on this number at any time. Okay. If you are calling between 9 to 5:30, we will receive your call. We will give you immediate answer. But if you are calling at around like after 6 o'clock, your voice will be recorded and we will answer next day. Okay. No problem in that, no?
Good. And write down one more number. It is 2321 4737. 2321 4737. For Delhi, you have to add 011. So this is landline number. You can call at this number also. So these two numbers I am providing you for asking your queries. It can be general queries, it can be technical queries, it can be related to your academic session related to physics, chemistry and maths. Then financial assistance on selection to IIT and NIT. When you will be selected in a college, like you will get the opportunity to select in IIT or NIT, and your presence here, attendance would be 75% minimum, then we will help you to provide the scholarship also. Okay. Okay, next, let's come to our academic support. We are having 4 dimensions. One is content, second one is assessment, third is PCP, personal contact classes, and helpline. Content, we are providing you content in the form of this text material. Okay, then videos are just in this tablet also, and we will provide you link time to time, and the practice questions that would be also sent to you on your email, as well as we will push it into your tablet. So we will provide practice question time to time. Regarding the assessments, self-learning assessments would be there, mock test would be there, weekly assessment when you will come here and you will perform on Sunday, and then end of term test. When your term will end, we will provide you one term test. It would be based on that criteria and procedure of this IIT, full syllabus of IIT. We will provide you that test also. Okay, next come to personal contact classes. That's your first days, yours of PCC. Weekend classes at CBSE academic wing. You have to come here on Saturday and Sunday. Good. And then weekend classes at different study center. As you are sitting in Delhi, many of your friends are sitting at different centers and they are also attending the class. We will just telecast from here. It will be broadcasted from Delhi center and it will be seen at different centers. Extensive face-to-face program for the focus group before JEE mains and for the qualified students of JEE mains. We will provide an extensive face-to-face contact classes. We will find out the best students out of you. It means that everyone has to become best now. Okay, it would be extensive face-to-face contact class. We will invite you from all the centers. Okay, and you will come here in Delhi. We will make residential arrangement for you. It may be of 15 days or 21 days as it would be decided. And from morning to till evening, we will just provide you like coaching and extensive teaching. So that would be a wonderful opportunity for you. For that, to gain that, to achieve that, you have to work hard from the beginning itself. Okay, then that would be 2 phases before JEE mains, and if you will qualify for JEE mains, we will provide you coaching for advance also. Then helpline, 9 to 5:30 p.m. helpline to cater technical, journal and academics queries. Helpline through phone, email and online. Like I gave you one number of phone. Okay, you can write down our email also. We will provide you email also, and then third is on online. We will provide you everything. Now the class outlines. Online contact classes through AView. We are having 60 Udaan centers. Okay. Then online query solving session and interaction with the students. Classes by the well-renowned subject experts. Okay. Professionals used to come here and they used to, as you will interact with one of our subject expert today also. So you will see how we are inviting them and how expert they are in their field. Doubts are resolved in the class through the visual contact program from the subject experts. Subject experts will solve your queries, including motivational sessions. We have kept one session of motivational session, so you must be motivated time to time. Refreshment for the students and assessment to evaluate the performance of the students on the weekly basis. We used to, when you will perform your assessment, automatically you will get your marks also. Okay, how much you achieve in that. So marks will come automatically to you. Course of study.
Your timeline started from today and it will end for 31 weeks. So it will come to May. Okay, it will come to May 2000. No, 17 no. अभी फिलहाल 11th का सेशन आपका कहाँ तक जाएगा? 16th तक. Then again from 1st July we will start from class for class 12 and it will end to 2017. So for class 11th it is of 31 weeks. Students will be required to maintain 75% attendance minimum. Okay, minimum 75. It doesn't mean ki okay we will come like we will maintain 75 only. Try to come regularly, daily on Saturday and Sunday. That is a great opportunity for you. Okay, you are the 14 girls selected from Delhi. See, how many girls would be left who want to come but they didn't get the opportunity. So you have to come regularly, daily on Saturday as well as Sunday. You have to make your attendance. So we are having two type of schedule. We will provide you one schedule of week. Like for example, on Saturday and Sunday, what is going to happen? We will push this schedule on your mobile. Okay, you will get this schedule 3-4 days before the commencement of the class. This type of schedule you are going to get. Okay, this is weekly schedule, and we will provide you the whole schedule for the session. Okay, for the course that would come in this shape, and we will provide you this also, so that you can plan your course accordingly. See, you are going to give exam on Sunday and you are having copy of this. What things are coming in assessment in Sunday exam? So you have to prepare accordingly. In that particular week, you have to prepare that subject, that topic, and in assessment, you have to perform that. We are inviting you on Saturday, Sunday, so that your course of your school should not be disturbed. But it doesn't mean you have to leave this course. You have to prepare yourself for this course also. Otherwise, it's of no use. If you are coming with a fresh mind, no learning is there, you are coming and you are just watching the resource person and you are grabbing a little bit, that is of no use. I am the student of GNV first batch. What I learned from GNV that if you want to do something, do it nicely. Otherwise, don't do. करो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो. What's the use of like बीच में जाके वापस आ रहे हो या बीच में जाके थोड़ा आराम से चलो? That is of no use. If you want to achieve something, then achieve it. Otherwise, no use. So you have to study in that duration and you have to give your best in that assessment. So this is the schedule of our weekly as well as the whole course. Virtual classroom. See how study centers are connected with the help of AView. You are watching these cameras. Okay, they are focusing on me. And now what I'm saying is webcasted to all the centers. So this is a way how we are conveying our things. So AView Classroom is a framework that provides a rich, interactive, social environment for e-learning. It is a video conferencing software which is used to teach in a live interactive mode. Live, if you want to ask some question, you can ask. If a student sitting in a Hisar, she wants to ask something, she can ask. Okay, it will come here and we will solve at that particular time, at that moment only. So it is a live interactive mode to various geographical locations across India. AView Classroom software can be used to connect several locations. I have told you that we are having how many centers? 60 centers. So we are all are connected together this time. So this is a virtual classroom. How we are saying, why we are using the word virtual? So this is the thing why we are using. So live streaming of classes through CBSE YouTube channel. In case someday, okay, you are not able to come. Someday I said so. If you are not able to come, you can watch the video at YouTube also, as well as we will provide you one link. Okay, by coming online, you can click on that link and live. Suppose I'm interacting with you. At that particular time, you can see that resource person. So don't need to wait for evening. At that particular time, you can see your resource person teaching here in this center. So two choices are there. Either if you are connected, you can see live. Otherwise, in the evening, whenever you get time, you can see with the help of our CBSE YouTube. Helpline portal. I told you that you can use helpline with the help of this tablet also
coming online anywhere else where you are internet connectivity. So we will provide you one roll number that will be pushed in your mobiles now. That roll number will be your username as well as your password. With the help of that, you will come to Udaan helpline portal. We will see you in a deep process. I'm showing you the process, okay, so that you can make maximum use of helpline. CBSE Academy खोलो. And write down our website address also. It is CBSE Academic, www.cbseacademic.in. See, this will come. This is our website of CBSE. Now you have to be familiar with this website. When you will come to this website, Udaan is there. You have to click this Udaan and you will come here. In that you will click helpline. So this shape would come here. Okay. But you have to put in username, your roll number. So just put down one roll number 1412 5 times 1. Same is your password. So 4 times कर दो. So your name will come here, your roll number, your mobile number, and your email. Okay, click here to continue. See, if you want to ask any question, 3 categories are there. So click it. Like physics is there, you just click it. Sumit. Physics, chemistry, and maths. 3 choices are there. For example, we are picking physics. Here are the topics. Just click it. All the topics are here. So, for example, kinematics. If you want to ask fresh query, you have to click there. Then you have to put your question here. Okay, you have to write down your question and answer would come to you. Okay. Come to back. Back. See, this is fresh question if you want to ask. That would be in your own language. But if you want to see the questions asked by other students, okay, you want to see how many questions have been put by other girls, then refer from questions previously asked by other students. See, these are the questions that have been asked by other students. So in both the way you can help yourself by asking your question as well as taking help of the question already put by other students. Back aachaiye. Okay, understood? How can you ask your questions? So this is academic portion, then click the technical one. This is the technical queries. You can put any technical queries. So if, for example, one girl asks, I'm unable to sign in the Igniter after clearing the data, it is saying invalid password. Anything happens with your tablet, okay, you can ask in the technical query. So first was of academic, then second one is of technical. Now come to the third one. This is a journal query. Okay. For example, you want to ask about JEE mains, exams, anything that is general, not academic or technical, you can put your query here. So this is the journal queries. These are the question history. So many questions would be asked by other students. You can see the history there. Okay, let's come to the next.
Hmm. And we will provide time to time feedback form to you. That would be here in that form portion that you have to fill time to time, so that we can get what exactly happening, how much you are satisfied, how much you are getting, if there is any problem. So with the help of feedback form, we can get it. So this is a helpline. How you can take help of helpline. Acha laga concept? Okay, but you have to make use of it. Otherwise, it's of no use. So ask as many as question you can ask. Okay, now come to the next. So I told you about the helpline. Next. See, helpline portal is going to help you in physics, chemistry, maths, general queries as well as technical queries. This is helpline in the three forms. In online, I said, as you are coming to our website and you are going to Udaan, that you can do in any form, like in laptop, in your computer. So that is our web application. You can call us on the number given, toll-free number, that is also IVRS. आप उस पे भी बात कर सकते हैं. And then third one is mobile application. You can save this thing in your mobile also, and you can put your question through mobile application also. And in this tablet also, helpline would be there. When we will provide you, you can take help of this tablet also. I told you about how to log in and how to ask queries. So that is the thing. Interactive voice response system. I gave you one number, na? Toll-free number. How you have to use this? You have to dial this number. Okay. Then you have to enter your, we will provide you 8-digit Udaan roll number. Then you have to enter that unique 8-digit Udaan roll number after a beep. A beep sound would come, then you have to enter this. Then you have to choose the language. It will say either Hindi or English. And language in which you are comfortable, you have to press that. And then you have to enter the type of assistance. Like you want to ask academic query, or technical query or general query. They have the option to speak directly to the academic support group, technical support group. Like I told you, in the duration between 9 to 6, we will provide you immediate answer. We will respond you. But if you are calling after 6 p.m., then your voice would be recorded. And when our subject experts or our facilitator would come in the morning, they will listen your voice and they will provide you the answers. Learning application. This is the main application which the students use for assessing the videos and textual content provided. And this everything is in our tablet. This app allows the students to assess the material in an organized manner for 3 subjects: physics, chemistry and maths. Additionally, this app also gives access to the students to the 3 forms of assessment. It also allows the student to access the NCERT textbook. I told you this tablet would contain your study material, soft copy of this study material, as well as NCERT books. So everything is there in your tablet, but you have to make use of it, best use of it. Just I told you that we used to keep extensive face-to-face program. Last time we have organized for our class 12, and really it was a very successful program. And like in this the time we are planning for in December and January for class 12, and we have requested for class 11th also. Maybe it can be in June. So we will try if we can. Focus group of brilliant students. Then 8 to 7 p.m. tight schedule classes. Okay, meal is there, and regular visit of CBSE officers. CBSE officers used to go there, interact with the students. Daily topic-wise tests are there, and 3 hours JEE means test is also there. So we used to make you practice on the JEE pattern of 3 hours. So this is an extensive face-to-face contact program. So I would like to thank you all, but I just want a promise from you that you have to work hard from the day to day itself. You have to focus yourself, just make your timetable that how you are going to adjust these Udaan contact classes, as well as how you will plan yourself for doing all the assessment given to you, as well as how do you have to learn. So you have to keep everything in your timetable. Next time when you will come, I will see your timetable that how you are going to managing this thing with your daily routine. So thank you so much, students.
That's it. Well, students, thank you for patiently listening to madam and to understanding the entire scope of the Udaan project. Well, we want to start an interactive session with you, and I'll request any of you to please ask any question. Please feel free to ask any question relating to your academic support, to other logistic supports, and to general queries if you have any. Please tell us. And I just want to share with other students who are at our city coordinator centers. We have a city coordinator who is the principal of of this school. He will be the overall project head of that at the center. So all my students, I'll request you to please have a very deep interaction with him, keep in touch with him, update him, and I'll request all my city coordinators to please motivate all the students who are coming, make sure that their attendance is good. Please assist them in all their problems, try to resolve their queries. Besides the city coordinators, we will be having subject facilitators. Students are expected to seek assistance from these subject facilitators in case they are facing any problem relating to subject matters. So immediate help at the center will be available to you as far as subject is concerned from the subject facilitators. Okay, students, I hope this is clear to all my students who are there at the 60 city coordinator centers. Now, students, if you have any query, please ask any question, any issue on any issue which you feel is important to you to make this project a success. Well, any student from any center, Bhopal, Kozhikode, Tikamgarh, any student from any center who want to ask a question, we are there. Our Honorable Chairman CBSE is with us. We can listen to your problems and try to find out solutions in the coming weeks. Please. Yes, please. Yes. Which center? Yeah, from KV Gorakhpur. KV Gorakhpur. Yes, please ask the question. आप हिंदी में बोल सकते हैं, वेलकम। आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले। हमारे पढ़ाने का माध्यम इंग्लिश एंड हिंदी होगा, कंबाइंड होगा, जिससे कि सभी बच्चे समझ सके। हिंदी एंड इंग्लिश, हमारे जो भी फैसिलिटेटर यहाँ से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे, उनकी भाषा हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगी, बाइलिंगुअल होगी। आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं महसूस होगी। जी पूछिए। यस। See students, we will be requesting you, you can send a mail of your school principal
we will be writing this to your school principal to leave you 1 hour earlier so that you will be able to attend the weekend classes, and your attendance will also be counted. All those students who will be attending weekend classes for Saturday, their attendance will also be considered in their school for that purpose. Okay. We will write to your school principal that you are a participant of Udaan project. You may kindly be allowed to leave early to join the weekend classes. कोई और देखो. पुणे. Students from any other center who want to ask any query, who have any query, please. Please ask. हाँ, अगर आपका पेपर है उस दिन, तब आप हमसे यहाँ पर मेल भेज दें, आपके जो आपके सिटी कोऑर्डिनेटर है उनको इन्फॉर्म कर दें, तब आप उस दिन आप नहीं है. क्योंकि एग्जाम आपको मॉर्निंग में होगा, राइट? प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, आफ्टर एग्जाम यू मस्ट कम. इफ यू ट्राई सकता है तो कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम तो ये सब देखो आपका चलते रहेंगे, एंड 11th एंड 12th दोनों में ही ऐसा रहेगा आपका. सो यू हैव टू सी and don't make it practice ki okay aaj exam hai so we are not going to run classes. एक और आया. Yes, student. Our school principal does not allow me to attend Saturday and Sunday class. Where from which school you are? JNV Muzaffarpur. Dear students, we will be speaking, our honorable chairman will be speaking to Commissioner KVS JNV, and we will be writing them all those students who have been selected under Udaan project may be allowed to do their classes on Saturdays and Sunday. So you will not face this problem. Okay. We will be sending the list of all JNV students who have been selected under the project to Commissioner NVS for his kind approval, so that they can attend the class. Yes, ये है ना. This. Yes, please. There will be 3 different teams. Choose for the key subjects, or there will be one teaching all the 3. No, dear students, you will have different subject experts for each discipline. So physics, there will be a separate teacher for physics, there will be a separate subject expert for chemistry, and separate subject expert for maths. And these would also be changing based on the expertise which is available with the subject expert and the topic which is to be taught. So you will be having access to very quality subject experts with renowned academic recognition. So prepare yourself, gear up for yourself to be part of this Udaan project. Next 3 questions हैं. पटनायक. हाँ, मिस्टर पटनायक बोले आप, मैं सुन रहा हूं आपकी. पटनायक साहब बोले आप. भुवनेश्वर सेंटर. Bhubaneswar Center, we are looking at you. Yes, please, Bhubaneswar Center, please ask your question. कोई दूसरा ले लो.
Yes, Shimla Center. My question is कि क्या हम जो हमारा कोर्स आप हमें पढ़ाएंगे उसमें हम लोग जो हम 11 में प्रीवियस पढ़ चुके हैं क्या हम वो भी उसमें कवर करेंगे? बच्चों, आपका सिलेबस जो हम पढ़ाएंगे वो जेई का जो सिलेबस है। क्वेश्चन है जी, जो हम लोग +1 का सिलेबस मैं वही बोल रहा हूँ बच्चों, आपका सभी सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 विल बी कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। तो जो आप पढ़ भी चुके हैं वो भी हम पढ़ाएंगे। आप जो पढ़ चुके हैं उससे प्रोजेक्ट की पढ़ाई अलग है। हम आपको शुरू से सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए 11th के सिलेबस को पढ़ाएंगे। पॉसिबल नहीं है कि हम सर एवरी सैटरडे और संडे को यहाँ पे क्लास अटेंड कर पाए क्योंकि सर इसमें हमारा लगभग 6 घंटा हमारा वेस्ट हो जाता है आने जाने में। और सर एवरी हम लोग यहाँ के हैं नहीं, जैसे हमारे सेंटर से हमारा दूर पड़ता है हमारा घर, तो सर हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? बच्चों, ऑनलाइन क्लास अपने घर से ही कर सकते हैं बच्चों ये ऑनलाइन क्लासेस का पर्पस ये है कि आप आएंगे और हमारे पास जो एक क्वालिटी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के आधार पर पढ़ाएंगे जो कि आपको प्रिपरेशन में मदद देगा। तो हमारी पहली रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप को ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड करें। इसके बाद हम सभी सिटी कोऑर्डिनेटर से आज एक निवेदन भी करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी दूरी है आने में, उनके लिए अगर किसी तरह की रुकने की व्यवस्था की जा सकती हो किसी सरकारी गेस्ट हाउस डॉर्मेट्रीज में, तो वो कोशिश करें। लेकिन छात्रों से मेरा निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा वीकेंड क्लासेस को अटेंड करें, क्योंकि वीकेंड क्लासेस को अटेंड करने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, उसका एकेडमिक बहुत फायदा होगा आपकी तैयारी के लिए। Yes, Tirupati Center. Good afternoon. Please ask. Hello, sir. Yes, yes, sir. Hello. Yes, yes, please. Students are coming from 6 hours distance, sir. Yes, Hello? yes, yes. I'm listening. The students actually they are expressing their difficulty to attend Saturday and Sunday classes. They have to travel 4 to 6 hours along with the escort teachers. See, That they are staying actually in the hostel. see, Tirupati Center. Yes, please continue, sir. Please complete. Students are actually facing difficulty. They are staying in the hostels at the Andhra Pradesh welfare schools. So every week the administration have to send children along with the escort teachers, and are coming here also the accommodation problem. In individual we can provide for room and all, but food arrangements and all they have to make their own arrangements. So they are expressing the difficulty to travel every week 6 hours from Nellore to Tirupati and to stay here 2 days and to go back to their classes again. Yeah. So they are expressing this distance problem, sir. Yeah, Tirupati Center, you see our top management is also listening to this problem. We will be working out on it, thinking on it. Besides this, the immediate solution which I suggest is that please kindly look on for some government accommodation in the shape of hostels of other academic institutions. If you want our assistance, we can also request those academic institutions. We will be writing them to provide these transit hospital facilities for one-day weekdays. In the beginning, I will also request the parents to please motivate their children, and the city coordinator to also motivate the parents to please cope up somehow for initial days, and let us find out some solution in near time, please. And try to make use of what you say accommodations, hostels,
other educational institution hostels. Thank you. Yes, yes, Guntur Center. Yes, Guntur. गोवा इम्फाल का लगाओ, हाँ इम्फाल का लगाओ, बाहर का जगह इम्फाल सेंटर. या वी आर लिसनिंग टू यू प्लीज. Yes, Imphal Center. Please go ahead with your query. Your audio is not clear, Imphal Center. Yeah, please ask. Yes, Gorakhpur Center. जी तो क्या सैटरडे में अगर आप क्लास चलाएंगे तो उसके लेवल में क्लासेस वहाँ छूटेंगे? दोबारा से बोले. वो छूट जाएगा सैटरडे को जो क्लास वो छूट जाएगा. देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो सैटरडे और संडे को इसीलिए रखा गया है कि बच्चे की जो वीकडेज की क्लासेस है वो डिस्टर्ब नहीं हो. और सैटरडे को हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं 1 बजे से. तो और इसमें इस प्रोजेक्ट में पूरा 11वीं का सिलेबस जो स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस यहाँ पर भी कवर होगा. तो अगर बच्चा स्कूल में क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है और यहाँ कर रहा है तो उसका सिलेबस कोई छूटेगा नहीं, वो सभी सिलेबस यहाँ पर हम कवर करेंगे. और पिछले साल भी बच्चे जो हैं वो आसपास के शहरों से आ रहे थे, मैनेज कर रहे थे. तो मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि बच्चों को क्लास अटेंड करने में जो सहूलियत है उसे प्रोवाइड करने की प्लीज कोशिश करें. हम अपनी ओर से जो भी अच्छा होगा उसे करने की कोशिश करेंगे. जी आज की जो हमारी स्कीम है बच्चों, उसमें हम आपको जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. अभी आगे हम इस पर सोचेंगे और विचार करेंगे कि क्या इस तरह का कोई प्रोविजन हो सकता है. अगर होगा तो हम आपको नहीं. जेएनवी के सभी बच्चों को पिछले बार भी ऐसी समस्या थी, हमने उनको लिखा है. तो जेएनवी के जो प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट है वो अवगत है कि जो उड़ान के बच्चे हैं उनको टैबलेट दी जाती है पढ़ाई के लिए, तो वो उन्हें अलाउ करेंगे सिर्फ उड़ान की टैबलेट. ठीक है, सिर्फ स्टडी, उसका पर्पस फिर सिर्फ स्टडी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है. लेकिन आपके स्कूल प्रिंसिपल आपको उड़ान टैबलेट रखने के लिए परमिट करें. इम्फाल लगाओ अगर मिल सकता हो. यहाँ कोई भी नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है. हाँ कहीं भी लगाओ. हाँ यस यस. गोवा सेंटर जी. Yes, please go ahead with your query. Sir, actually we are told that we'll be having one teacher throughout the whole lecture in our school itself. So we had a doubt that can we have
3 teachers of the specified subject from our own school throughout the lecture timings? No, this is you have not been properly informed, beta. The project emphasizes classes to be held from Delhi. So we will be having our subject experts who will be teaching you online from Delhi. So what you have at the center is a subject facilitator, that your city coordinator or your school principal, he has the right to nominate any subject teacher as the facilitator to assist you in the in your, what you say, a particular subject. Yeah. Now students, now students, I welcome Mr. Sandeep Singhal. He is from IIT Roorkee and a consultant, and he will give a talk to you and how to prepare for IIT JEE. Thank you, Mr. Singh. Good afternoon. आपके क्वेश्चन सुन रहा था. So, I'll teach you physics. I just took a class up there for class 12th, and last year also I took classes for Udaan. There are a lot of questions which students are asking. You're also asking. आएंगे कैसे? ट्रांसपोर्ट कौन देगा? खाना कौन खिलाएगा? पढ़ाएगा कौन? I'll share an experience with you. I mean, I travel to many schools in Delhi, and I happen to travel to certain schools outside Delhi also. तो कुछ साल पहले, I had taught a student called Shitikant. He was from Patna and he got a rank 1. His all India rank was 1. That time I was teaching in Kota. So when we came down to Delhi, मुझसे सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स पूछते, सर ये पटना से, बिहार से इतना रिजल्ट क्यों आता है? तो आई थॉट कुछ गड़बड़ है. ऐसे क्या सकता है यार? हम यहाँ इतनी मेहनत करा रहे हैं, सारा रिजल्ट बिहार से, रांची से क्यों आता है? I was under the impression that there is something wrong there. So what I decided, I took a flight and went to Ranchi. So my flight reached at about 2:33. You can understand me? Thank you. Good. हंसते रहो ना, बताते तो रहो. Good. Respond. So the flight reached there. We got down. मेरा marketing executive आया. Let's go to DPS Ranchi. I went to DPS Ranchi and Mr. Bareja was the principal there. तो मैंने कहा यार 4 बजे कौन से स्कूल में ले जा रहा है? बच्चे कहां से मिलेंगे? कैसे चल के तो देखो. मैंने कहा यही होता है इनका हाल. ये तभी इनके रैंक आती है इतनी अच्छी. शाम के टाइम कौन सा स्कूल होता है? Because I was in Delhi. I was not even aware this is something is happening like this. And parallelly, one day I went to a school in South Delhi. The principal took me to the school. Sir, auditorium देखिए कितना खूबसूरत है. बिल्कुल है मैम. Swimming pool देखिए आप कितना amazing है. मैंने कहा ये उससे भी extraordinary है. मैंने कहा मैम पढ़ाई लिखाई की बात. कहते चलिए ना, take a seminar. You'll meet the children there. You'll be surprised. I was talking about science and maths for 1.5 hours. The seminar got over. I came to know the students were from commerce. I mean, unbelievable. मेरे को ये नहीं समझ में आया ये 1.5 घंटा मेरे को सुन क्या रहे थे. तो फिर मैंने रियलाइज किया इन्होंने सोचा होगा कुछ भी सुना दो क्या फर्क पड़ता है. आप सुनाने आए हो, आप सुना के जाओगे, आप अपना काम पूरा करके जाना. South Delhi, a posh school. And I'm traveling to Ranchi in the evening session. मैं वहां जब पहुंचा तो मुझे वो 4th फ्लोर पे ले गया. नीचे दरिया बिछी हुई थी. मैंने देखा बच्चे आने शुरू हुए. 1, 2, करीब 400 बच्चे नीचे आके जमीन पर बैठ गए. And they were not escorted by a single teacher. दिल्ली में जब स्कूल्स में जाते हैं ना तो टीचर्स बोलती हैं स्टूडेंट्स बी साइलेंट, स्टूडेंट बी साइलेंट. एक बार तो एक बच्चे ने माइक छीन लिया टीचर से. मैम यू बी साइलेंट, आप बहुत बोल रही हो. तो वहां में गया, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बरेजा साहब आके पीछे बैठ गए. I started my session. It went on for 1.5 hours. Before starting the session, I asked them, how many of you scored 100 on 100 in mathematics? They were class 11 students. More than 90% students raised their hands. मैंने कहा सवाल समझ में आया भाई? Let me talk in Hindi. मैंने कहा भैया मैं पूछ रहा हूँ 100 में 100 कितनों के हैं?
कोई हाथ नीचे ना आए। दिल्ली में जब मैं सेमिनार लेने जाता हूं ना, मेट्रोस में जाता हूं, why I'm telling you why Udaan is important for you, I'll tell you why. Because in metros, when I take this seminar, when I ask the students, 100 में से 3-4 हाथ उठते हैं। और कुछ बार तो ऐसे होता है दूसरा दोस्त को बोला, सुन सुन तेरे भी 100 थे यार। हाँ सर, हाँ मेरे भी। उसे खुद ही नहीं पता तेरे 100 थे कि नहीं थे, तो दोस्त बता रहा है। मैंने कहा यार ये तो अजीब सी बात है, कैसे उसका, मैं कहा चीटिंग करते हैं पक्का ही। 100% ये तो हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। द सेमिनार गॉट ओवर, वो बच्चे वापस जा रहे थे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ बात नहीं करी। मैंने कहा अब तो 100% पक्का है, इनको पता ही नहीं चला मैंने बोला क्या है। दे हैवंट अंडरस्टूड व्हाट आई हैव स्पोकन। अब उनमें से एक लड़का वापस आता है घूम के, छोटे से कद का, शॉर्ट गाय, डार्क कॉम्प्लेक्शन। सर पोलाइटली, बहुत बहुत हम्बली, सर एक बात जानना चाहते हैं सर, सर सितिकांत भैया नंबर कितना पाए थे? मैंने कहा तुमको सितिकांत से क्या लेने देना, टॉपर के नंबर क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज बच्चे मुझसे जनरली पूछते हैं सर सिलेक्ट होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए। मुझे तो ये सुनने की आदत है, सर मिनिमम मार्क्स, टेल मी व्हाट आर द मिनिमम, एंड दिस स्टूडेंट इज आस्किंग मी हाईएस्ट मार्क्स। ऐसे काहे जानना चाहते हो? सर प्लीज बताइए सर, और कितना नंबर पाए थे सितिकांत भैया? हमने कहा 463 नंबर पाए थे, 463। और बच्चा पलट के क्या बोलता है, सर 464 आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा ना सर। I asked him, तेरे डैड के नंबर? सर इसी स्कूल में चपरासी है सर। You need a reason why you want to do it. It is immaterial who teaches you. It is immaterial where you study. The most important thing is, do you have a reason to study? And I'm sure these girls from Udaan have a strong reason, a strong desire to do it. That boy finally got a rank 26. He's a professor in MIT teaching physics. जिस बच्चे को के पास किसी काम को करने का रीजन है, ये बाकी सारी चीजें इमटेरियल है. They're all icing on the cake. The real thing is, do you want to do it? Now you have to tell me first, because I'm going to take your classes. How many of you have a reason to get into IIT, and what is that reason? Anybody of you? एक मुझे कोई बच्ची ये बताए कि सर हम ये क्यों करना चाहते हैं. आप बताओ क्यों करना चाहते हैं. बैठे बैठे बताओ, कोई बात नहीं. एक आदमी मिलेगी जिसके सर जॉब है, तो जैसे यूपी पुलिस में दिल्ली पुलिस में. सर मेरे ग्रैंडफादर थे, सर बहुत अफर्ट करते हैं कि मेरे होती IIT बने, इंजीनियर बने. सर मेरे फादर नहीं आया, मेरे ग्रैंडफादर आया वहाँ से, सदना से सर लाए पहले नवोदय में से, फिर मेरठ लाए, मेरठ से फिर से यहाँ पे लाए. सर आई वांट टू फुलफिल माय. क्या नाम है आपका? तो राखी जान लगा देंगे तेरे साथ. अब तू अपने गांव की पहली लड़की निकलेगी जो इंजीनियर बनेगी. बट एक वादा करना पड़ेगा, जब तुम इंजीनियर बन जाओगी IIT में, तो बाहर नहीं जाओगी, ऐसे बाकी और गांव ढूंढोगी जहां पर भाटी जैसी लड़कियां और हैं. प्रॉमिस करना पड़ेगा ये. तो गुरु द्रोणाचार्य हूं तो उससे मांग रहा हूं, ये बाद में मना मत कर दियो इस बात के लिए. और बताओ कोई रीजन. आप बताओ बच्चे. I mean, amazing. I mean, this is what this Udaan program is all about. अब आप कहोगे, सर, हम पढ़ना चाहते हैं. We have a reason to do it. Why do we need coaching? घर में नहीं पढ़ सकते. अब कुछ बच्चे कह रहे थे ना, सर घर में ही पढ़ लेते हैं. आपको एक अच्छी बात बताऊं, सही बात. सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई चीज नहीं है. फिर आप पूछोगे, सर, why do you need a coach? अब छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं. फिजिक्स का आदमी हो तो हर चीज एग्जाम्पल से देता हूं ना, पढ़ाने की आदत है. थियरी एग्जाम्पल. एक बार ओलंपिक्स हो रहे थे.
बहुत सारे एथलीट्स देवर, बट देवर 5 एथलीट्स वो वेरी क्लोज टू ईच अदर. और जो सबसे आगे एथलीट था वो केनियन था. कौन था? जो उसके साथ साथ था, दैट एथलीट वाज फ्रॉम यूएस. ठीक है. अब ये 5 लोग बहुत तेज भाग रहे हैं, बाकी लोग भी हैं, बट ये 5 पर पूरा फोकस था. अब सडनली क्या होता है, 4th एथलीट 2 लैप पहले गेम से बाहर आ जाता है. आप लोगों ने बाद में उससे पूछा, यार ये तुमने क्या किया यार, व्हाई डिड यू कम आउट ऑफ द रेस? ही सेड, भाई साहब एक बात बताओ, ना गोल्ड मिलेगा, ना सिल्वर मिलेगा, ना ब्रॉन्ज मिलेगा, मैं भाग क्यों रहा था? बड़ी जल्दी रियलाइज हुआ तुझे भाई. But he thought, I'm not going to get anything. So he decided to walk out. वो बाहर आ गया बेचारा चुपचाप. अब 1, 2, 3 और 5th ये भाग रहे हैं. ध्यान सुनना. अब केनियन बहुत तेज भाग रहा था, बट यूएस का एथलीट उसके बहुत नजदीक था. भागते भागते जब फिनिश लाइन आई, कौन सी लाइन आई? फिनिश लाइन. तो दोनों ने फिनिश लाइन पर एक साथ पैर रखा. यूएस एथलीट ने भी और केनियन ने भी. जीता यूएस वाला. तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुई, इट्स अपार्थेड, इट्स ब्लैक अगेंस्ट व्हाइट, ये तो होना ही था, यूएस एथलीट को तो मिलना ही था. बड़ा शोर मचा बचा, बट फाइनली ही वाज रैंक 1, केनियन वाज रैंक 2. आप जानते हुआ क्या उसके बाद? 2 महीने बाद पता चला कि जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था उसने डोप ली थी. He took drugs. He was disqualified. 5th क्या बना? 5th कौन बना? 4th. 4th क्या बना? हम यही सोचते हैं, क्लास के अंदर 10 लड़कियां बैठी है, यार ये तो मेरे से बहुत अच्छी हैं. आपको क्या पता अपने बारे में भाई? आपको क्या पता उस दिन आपका ही नंबर हो? सब लोग बताते हैं, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 lakhs write the exam, finally 10,000 get selected. You can be one of those 10,000. अब वो केनियन क्यों हारा? जब दोनों ने फिनिश लाइन पर एक साथ पैर रखा. बाद में पता चलता है चतुर्वेदी साहब, there was a laser which was passing. The US athlete was trained and he knew that there is a laser which they have to cross at the finish line. तो जैसे यूएस एथलीट आता है, वो अपना चेस्ट को एक्सपैंड करता है, लेजर उससे पास कर जाती है. केनियन को ये पता नहीं था, वो ट्रेन नहीं था, वो कोच नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि यार एक लेजर भी है, उसको क्रॉस करना है. पैर तो रखता है, लेकिन नंबर कोचिंग सिर्फ ये कर सकती है. आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 16 years and have been awarded the best faculty in physics, the best teacher number of times. ये सब बेकार की बातें हैं. मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, लेजर पास कर रही है भाई. ये 4 सवाल हैं, ये चारों आप सोचो, सीबीएसई ऑप्शंस क्यों देती है? why does you know the pattern of the paper? It's single, मतलब एक सवाल होता है, उसकी 4 ऑप्शंस होती है, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन फिल करनी पड़ती है. अब मैं बच्चों को ऊपर यही समझा के आया. क्या करते हैं बच्चे? सवाल ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. अरे भाई ऑप्शन क्यों दिया? फिर आपको तो उन चारों में से एक सही ऑप्शन को तलाशना है. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, एलिमिनेशन मेथड सिखाते हैं बच्चों को, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाते हैं, वेक्टर से डायरेक्शन का बता देते हैं कि ये प्लस के क्या है, माइनस के पे, प्लस तो हो ही नहीं सकता, माइनस ही आएगा, माइनस के ही ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है. कोचिंग कैन ओनली ट्रेन यू, टेल यू द रूल्स ऑफ द गेम. करना बच्चों आप नहीं. अगर आप मुझसे पूछो कि हमारे आईआईटी बनने में उड़ान का कितना रोल होगा? 5%. दादा का, दादी का, मम्मा का, पापा का कितना रोल होगा? 5%. 90% किसका है? और अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो 100% किसका होगा? हम दोनों भाग जाएंगे, मम्मी पापा भाग जाएंगे, उड़ान भाग जाएगा. यार ये बच्चे ही ऐसे थे, क्या करते हैं? Are you understanding what I'm trying to say? हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं. We all want to be successful. I mean, Chetan Bhagat is again from IIT Delhi. He's a very, very close friend. हम दोनों एक साथ बहुत सेमिनार्स लेते हैं. तो एक सेमिनार के अंदर in Sri Fort, there were a lot of students. We asked them a lot of questions. So पूछते, how many of you want to become engineers? How many want to become doctors? मैंने पूछा, how many of you want to become teachers? चतुर्वेदी साहब 7,000 6,000 बच्चे थे, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया.
टीचर ही नहीं बनोगे तो पढ़ाओगे कैसे? अगर मैं टीचर नहीं बनता तो मैं पढ़ाता कैसे? प्लीज अंडरस्टैंड, ये छोटा विजन लेके नहीं चलना है। मेरे को सवाल निकालने का तरीका सीखना है, मुझे फिजिक्स समझनी है, मुझे 10 साल, 8 साल, 15 साल, फेज आउट, मुझे अगले 10 साल में यहां पहुंचना है, ये मेरी पहली मंजिल है। इसको रीच करने के लिए मुझे ये करना है, बट मेरा अल्टीमेट गोल ये है। बस अल्टीमेट गोल है क्या इंजीनियर बनने के बाद? एंड गेट गुड मनी एंड फ्लाई टू यूएस एंड फॉरगेट अबाउट ड्रीम्स। मेरे बच्चे जो मैं इनको पढ़ाता हूं, मैंने उनसे पूछता हूं क्या बनना चाहते हो, मोस्ट ऑफ देम से दे वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर्स, दे वांट टू सर्व द नेशन। ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। अगला एम आप वो भी सोच सकते हो, बी एन आईपीएस ऑफिसर, क्राइम को दूर करो, है ना? तो यहां आने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचना है। सपने कौन कौन देखता है आप में से? मैंने एक दिन एक सेमिनार में बोला हम बच्चों को सोचना सिखाते हैं। तो एक दादाजी बैठे थे सेमिनार में, कहता जी मेरा बच्चा तो सिर्फ सोचता है, सारे दिन सोचता ही रहता है, ऊपर देख के सोचता ही रहता है। तो मेरे बच्चे से अच्छा कोई नहीं सोचता। मतलब कमाल की बात है, सोचना सिखाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझसे किसी ने पूछा सर फिजिक्स को, आईआईटी फिजिक्स को मास्टर करने के लिए कितने सवाल करूं, कितनी बुक्स करूं, कितनी बुक्स खरीदूं? इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट भाई उड़ान वाले आपको टैब दे रहे हैं ना, आपके पास अपनी बुक्स भी होंगी, आप करते जाओ सवाल, 1000 सवाल, 2000 सवाल, कोई लिमिट है इसकी? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी? ना जी ना। अरे लड़की क्या कर रही है प्रैक्टिस के लिए, तो वही तो मैं कह रहा हूं, 100 करेगी, 200 करेगी, 500 करेगी, और फिर 500 का एक नहीं होगा, सारा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं कराया उड़ान वालों ने। ये टीचर ही बेकार रखते हैं, पता नहीं कहां से ले आते हैं। ये कहेगी तू तो यही नहीं करना। देयर इज नो लिमिट टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो क्या करना है? सोचने का तरीका डेवलप करना है। वो कैसे होता है डेवलप? जैसे सोचने का तरीका मींस थिंकिंग एबिलिटी इंप्रोवाइज करनी है, इंप्रूव करनी है। तो उसके लिए क्या डेवलप करना पड़ेगा? थिंकिंग मसल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कहां जाओगे? जिम। वाह भाई वाह। एक बार मैंने पूछा सवाल तो बच्चे कहते हैं सर बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ना बाबा रामदेव के पास जाएंगे। और मैंने कहा बाबा रामदेव बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, बॉडी बिल्डिंग नहीं कराता। तो देख लो बेचारे की उसकी बॉडी कैसी है, एक्सरे चलता फिरता। तो बच्चों ने कहा सर जिम जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग करने जाएंगे। और अब इमेजिन करो आप जिम गए, आपको कोच मिला, आप कोच के पास गए, सर आई वांट टू बिल्ड मसल्स। गुड, वेरी गुड। कोच भी 6-7 फुटा ऐसे होता है ना, कोच तो ऐसे मिलते हैं, कोच चूहे थोड़े मिलेंगे। तो वो कहेगा यार ये डंबल रखा है 10 पाउंड्स करके दिखाओ। लो सर वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अच्छा ठीक है, ये उठा 20 पाउंड्स। सर देख भी रहा है साथ शीशे में, मस्त सर, एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है सर। उसका 30 और डिफिकल्ट है सर, ये नहीं हो पा रहा है सर। यू नो व्हाट ही विल टेल यू? स्टार्ट विद 40। आप कहोगे यार ये अजीब पागल आदमी है। आपने हिम्मत करी, आप धीरे से उसके पास गए, सर एक बात बताओ, ये 10 में बड़े प्यार से उठा रहा था, 20 भी उठा रहा था, 30 मुझसे उठ नहीं रहा है, आप मुझे 40 उठाने के लिए कह रहे हो? अजीब टाइप के आदमी नहीं हो कुछ आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार? Why are you doing this to me? You know what he'll tell you? He'll tell you एक काम कर, वेट लिफ्टिंग करने आया। कहता हाँ, ये क्या है? क्या है ये? इसे वेट है? वेट तो है कुछ, शुरू हो जाए लेके बेटा। क्या होगा? जो कुछ है वो भी खत्म हो जाएगी। तो वेट लिफ्टिंग का मतलब ये थोड़ी कि वेट उठाना है, मतलब अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी की मसल्स बनानी है, तो मैं जितना उठा सकता हूं उससे ज्यादा उठाना है। ऐसे ही थिंकिंग मसल्स हैं। जो सवाल मैं कर सकता हूं उससे खुश नहीं होना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, पूछेंगे आपसे मम्मी डैडी, अब जब वापस जाया करोगे ना, आप पूछेंगे कितने सवाल किए? मामा 6 कर लिए मैंने आज 10 में से।
क्या बात है बेटा, तो चैंपियन निकली यार तू तो। वो ये नहीं पूछेगी 4 क्यों नहीं हुए। 6 से आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, मैं खुश नहीं हूं। 6 तो आपको आते थे, वो तो ये वाला वेट था, कौन सा उठाना था? 4। वो 4 जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपकी थिंकिंग मसल्स डेवलप होती जाएंगी। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, it is not important that you feel happy when you solve a problem. No, you should feel happy when you solve a problem. You should not be happy when you understand a problem, when a teacher teaches you. मैं जब क्लास लेता हूं फिजिक्स की और बच्चों से पूछता आज कैसा लगा, मजा आ गया सर, इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। मजा तो मुझे आया ना, नहीं समझे बात। जब वो क्वेश्चंस मैं कहूं कैसी रही क्लास, सर आज तो थक गए सर, जान निकाल लिया आपने सर, समझ में कम आया, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। This is how I take my feedback from a student. So when you have to solve a problem and you're not able to solve it, you should not be unhappy. But ऐसे मत करना कि घर गए, मामा मिली, कैसा गया? मेरे पास एक बच्चा आया एक दिन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Student comes to me and tells me, I was sitting on a 3rd floor. चतुर्वेदी साहब ध्यान सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आया रोते रोते, आंसू निकल रहे थे उसको। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मैं बर्बाद हो गया। मैं कहा तू बर्बाद क्यों हो गया, क्या हो गया तेरे को? आई वॉज डूइंग सम पेपर वर्क। मैंने कहा मैं 5 मिनट तुझसे मिलता हूँ। I came out, I asked the peon, where has that boy gone? It took me some 10-15 minutes. He said वो छत पे गया सर। छत पे क्यों गया? तो मैंने कहा गया होगा। मैं छत पे गया, तो जो पेमेंट होती है ना, पेमेंट, वहां खड़ा था नीचे, ऐसे देखा था नीचे। मैंने कहा यार अगर मैंने इसको जोर से आवाज दी गिरी ना जाए, तो मैंने धीरे से करा। रोहित था उसका नाम। मैं रोहित, पीछे मुड़ के देखा, हाँ सर। मैं आ जा यार, अब हंस के करना पड़ेगा ना यार, ऐसे में तो, ऐसे में उसे डांट दूं। वो कहता चल। तो मैंने कहा भाई रोहित कम। आया, मैंने कहा यार क्यों परेशान है, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी? कहता सर आपको नहीं पता। मैं कहा नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। बता क्या बात हुई? कहता सर कल आपने रोटेशनल लाइनिंग्स पढ़ाई थी। मैंने कहा पढ़ाई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मेरे बड़ा अच्छा लगा। पढ़ाई थी तो अच्छा लगा होगा उसको। कैसे बड़ी अच्छी पढ़ाई थी आपने? मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? नहीं हुआ। मैंने कहा यार वो फर्स्ट बड़ा डिफिकल्ट था, सेकंड थर्ड करके देख। कर लिया, कोई नहीं हुआ। अजीब हाल है यार। मैंने कहा रोहित यू हैड टू रिवाइज। सर आई रिवाइज्ड। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा यार वो मॉड्यूल ही डिफिकल्ट होगा। कहा सर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो गया। डिफिकल्ट। आई सेड चल रोहित तेरा एक टेस्ट लेता हूं। कैसा पूछो, वैसे मुझसे होगा नहीं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स चिल्ड्रन आर, वी लिव योर लाइव्स। ये कहना बड़ा आसान है कि टीचर्स पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, हम तो आपकी जिंदगी जीते हैं। आप जब हमारे पास आते हो तो आपका एक हिस्सा हमारे अंदर आ जाता है, इनबिल्ट। आप खुश हम खुश, आप दुखी हम दुखी, आपके पेरेंट बन जाते हैं हम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पेरेंट टीचर रिलेशनशिप और टीचर पेरेंट एंड अ स्टूडेंट रिलेशनशिप इज वी वांट नथिंग फ्रॉम यू, जस्ट हैप्पीनेस। आप खुश तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप दुखी तो बड़ा तकलीफ होती है, ये हुआ क्या, आज क्या गड़बड़ हो गई, कुछ कह दिया क्या? सो आई आस्क्ड, मैंने कहा रोहित एक सवाल का जवाब दे यार। क्या सर होगा नहीं फिर भी पूछ लो। मैंने कहा हु डिड द मैक्सिमम इन्वेंशंस इन साइंस? न्यूटन। मैंने कहा यार गलत है। क्या सर मैं आपसे कह रहा था ना मुझसे कुछ नहीं होगा। चेयर से उठना शुरू कर दिया। मैं कहा बैठ जा, बड़ी जल्दी से चेयर से उठता है तू। तो मैंने कहा एक और ट्राई, और ये तो रोहित तो पक्का बताएगा। मैंने कहा पक्का, सोच के बता। सोचता रहा। सर आइंस्टीन। अब मुझे पता ये गलत है। मैंने डरते डरते, काश तो टीचर से डरते रहते हैं बच्चों से, बड़ा ही बुरा हाल है। हमारे टाइम में टीचर पिटाई कर देता तो हमें खुशी मिलती थी, अब टीचर जरा सा जोर से बोलते तो रिपोर्ट हो जाती है। तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा रोहित यार ये गलत आंसर है। कहता सर देखा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैंने अपने माँ बाप का पैसा भी खराब कर दिया, और अगर मुझे ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आता, हाउ डू यू थिंक आई एम गोइंग टू गेट इनटू IIT? आई एम अ लूजर। मैंने उससे कहा,
मैंने कहा यार सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स, सबसे ज्यादा इन्वेंशंस एक आदमी ने किए थे, उसका नाम था एडिसन, हु मेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। वो कहता सर इससे मेरा क्या ताल्लुक? I mean, why are you telling me the story? I mean, I didn't know the answer. You told me the answer. I said, do you know one thing? एडिसन का एक असिस्टेंट था, वो असिस्टेंट एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया, वो आया एडिसन के पास, कहता भाई साहब मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। कहते क्यों? कहता मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया आपने? यस। क्या तीर मार लिया? I mean, do you know how many times did you try to make an electric bulb? He said, yes, almost like 40,000 times. He said, 40,000 बार तुमने अटेम्प्ट किया, 10 साल मेरे जीवन के लगा दिया, और मैं आपका असिस्टेंट, भाई साहब धन्य हो गया मैं। क्या खास बात है, बना दिया आपने। You know Edison, what Edison told to his assistant? He said, listen, the people would know one way to make a bulb. मुझे 39,999 तरीके आते हैं बल्ब ना बनाने के। अब रोहित भैया उठे, मैं फिर डर गया, मैंने कहा ये फिर कहां जा रहा है। मैंने उसको वॉच किया, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वो नीचे जा रहा था, मैंने कहा ले भाई, ही मेड माय डे। वो नीचे गया, मेरी क्लास थी, मैं पहुंचा उसके पास 3:30, और वो पागलों की तरह शोर मचा रहा है, वाओ वाओ। और मैं कहा तू फिर पागल हो गया, वो तेरे को दौरे पड़ते क्या? समथिंग रॉन्ग विद यू? He said, सर मैंने वो सवाल अटेम्प्ट कर लिया। So मैंने कहा what big deal? I mean your friends attempted that question in the first go. कहता है सर, और मैंने कहा तेरे को लगे 29 बार 30 बार तूने अटेम्प्ट मारी है? कहता 30 to be more precise. तो मैंने कहा फिर फायदा क्या है तेरे को? मुझे पलट के क्या बोलता है, सर मुझे इसमें गलती कितनी हो सकती है उसके 29 तरीके मालूम है। जब एग्जाम में जाएंगे ना सर, तो ये जो मेरे दोस्त हैं इनको वो गलतियों के तरीके नहीं मालूम होंगे, वो सिर्फ मैं जानता हूं। एवरी टाइम यू फेल, थैंक गॉड। जितनी बार गिरो उतनी बार भगवान का शुक्रिया अदा करना है। मौका दे रहे हो आप हमको। Every time you fail in life, every time you're not able to attempt a question, thank God you gave me an opportunity. And every time you're able to solve it, thank God again. But ask him that make me more powerful so that when a failure comes to me, I can handle it. But ये गलती मम्मी पापा के साथ मत करना। घर जाओ, क्या हुआ? कोई नहीं का, सारे सवाल गलत हो। तुम खुश क्यों? सर ने कहा था जब फेलियर होता है ना बड़ा खुश हो के आना चाहिए, पिटाई भी हो सकती है। So I won't take much of your time. बाकी क्लास में करेंगे। And thank you very much. आपको बहुत मजा आने वाला है। आप ये चिंता मत करो कहां से आओगे, कहां नहीं आओगे, क्या रहोगे, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बस आना है, जान लगानी है, और सारे प्रॉमिसेस जो आपने अपने आप से किए उनको फुलफिल करना है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। Well, dear students, now we break up for lunch and we will start our first Udaan class at 2:45, 3:15. So we are breaking now, and in 3:15 we will be having our first Udaan class of academic session 2015 and 17 for class 11, chemistry. So I welcome you all of you once again, and let's meet at 3:15 again. Thank you very much. Thank you, Single Saab, for your warm welcome. Yes, sir. Yes, sir. Be seated. Abhi aapko lunch. Always in the class, you feel you want to go to toilet, then you're most welcome to go. सर ये वाला वीडियो जा रहा है। No, sir. Yes, it's not. It's on the connected. वो सेम का भी आगे क्या? Wickets are on the way.
Okay. सुनो सेठ सर आ गए सेठ कॉल कर रही हूँ जल्दी करो बेटा आप लोग लंच कर लो, लंच करने के बाद जो जो क्वेरी आपकी है ना वो मुझे अपना नेम, रोल नंबर तभी हमने आपको नहीं दिया, नेम, स्कूल नेम, ये सब लिख के दे दीजिएगा सो दैट मैं आपकी क्वेरीज को सोल्व करूँ। जो भी प्रॉब्लम आपकी स्कूल को लेके कुछ भी है मुझे बताइए। ठीक है, अब लंच करो। ले जाना इसको।
You don't get in life what you want, you get in life what you are. You have to create an achiever's mindset. You have to create that yourself. My favorite book says, be ye not conformed to this world, be ye transformed by the renewing of your mind. And what you're doing right now is an indication of what's most important as you begin to invest in yourself, setting aside a time to be here. And so it's very important that you look at the people that's in your circle and begin to understand, are you growing mentally and emotionally and spiritually and professionally? Are they an asset to you or a liability to you? Yeah, see, one of the things about life, you're going to get hurt. You're going to make some mistakes. You're going to fail your way to success. But you got to be willing to experiment. You got to be willing to push yourself. You got to be willing to challenge yourself by putting yourself in a perpetual state of discomfort. And so the things happen in life. When you have goals and dreams, things happen. So as you look at yourself and look at your goals, setting aside time every day to work on your mindset, to expand your vision of what's possible for you. There's times in your life when things are going to happen that you've got to begin to put your dream on hold. And you might have to reinvent yourself. The wealthiest place on the planet is not in the Far East where there's oil in the ground. It's not in South Africa where there are diamond mines. It's the wealthiest place on the planet is the cemetery. There you see potential never realized. There you find books never written. There you find ideas never acted on. Imagine, if you will, being on your deathbed and standing around your bed, the ghost of the dreams, the ideas, the abilities, the talents given to you by life, but you, for whatever reason, you never pursued those dreams. You never acted on those ideas. You never used those gifts. You never used those talents. And there they are staring at you as you're lying on your bed with large, angry eyes saying, we came to you. Only you could have given us life. And now we must die with you forever. And the question is, if you died today, what dreams, what talents, what abilities, what gifts, what ideas will die with you? So as you look at yourself, not only must we begin to upgrade our relationships, but the other thing is, as you look at your goals and look at your dreams, write this down. You will fail your way to success. See, 85% of people allow their fear of failure to outweigh their desire to succeed. You're going to make some mistakes, and it's okay. Anything that's worth doing is worth doing badly. It's worth doing right if you know how to do it, but if you don't know how to do it, it's worth doing badly until you get it right. You have to be willing to experiment with life. I've done a variety of things that I had absolutely no idea I had the ability to do those things. Here's what I can say about you, and I don't even know you. You've got greatness within you, but you will not discover your greatness in your comfort zone. You've got to be willing to get outside of your comfort zone, because in order to do something you've never done, you've got to become someone you've never been. And most people, they go to their graves with their greatness still in them. And so as you think about your goals and dreams, I'm suggesting that you set aside time every day, if you're not doing it already, reading 10 to 15 pages of something positive every day, listening to audio programs, investing in yourself to expand your mind for what is possible, to develop a spirit of optimism. It says you look at yourself and look at your goals. There's some things that you can do when you challenge yourself, when you go outside your comfort zone. There are things that will come in the direction of your life that you can't even begin to imagine, that you're going to begin to evolve and go to new levels that will amaze you. And I tell you these things not to impress you, but to impress upon you. You have something special. You have greatness within you. You have the ability to do more than you can ever begin to imagine. And so what I'm suggesting that you do is to stretch yourself.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี
सर यहाँ पर भी चाहिए हेलो Next Saturday, that is 3rd October, that is my exam of chemistry. हाँ ये चाहिए होगा, पेन भी चाहिए होगा मेरे को। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। Good afternoon. Very few students. What are your plans? I'm sure we have not started, or we have started. What are your plans? What would you like to be? Tell me something about your career. What do you really want to be? You want to be a pilot? Oh, good. Have you ever traveled by air? Okay. You know the procedure? What happens? You know how the bird fly? Udaan. Good. And I wish you good luck, and whatever you want to achieve, I wish you should be able to achieve in a very nice manner, very promptly, and so on and so forth. And welcome to the Udaan program. I will be dealing with your chemistry, part of the chemistry thing, and it should be like an interactive session. Would you like to have an interactive session? And I will be asking some questions from you. Then we will be starting the thing, and that will be the concept, and then some few questions and some answers, and then interaction of that kind. Will that be very correct? So I will be dealing with a very important topic. Hello, I think I have not seen you. I will be dealing with a very important topic in chemistry to begin with. That is the mole concept and the stoichiometry. So let me ask you, what do you really mean by the term mole? Anyone who can say The amount of entities which present the amount of substance which contains as many entities as present in 1 gram mole. 1 gram mole? Or 6 into 0 to 2 into carry. 1 gram mole means? Carbon gas. Yes, 1 gram mole of. Okay, from where you have studied this definition? I studied this definition from my chemistry also and from my reference book also. Books also. And you have memorized that formula or definition. Have you gone through the concept? What do you really mean by the concept mole? Good. It's a very good thing. And can you tell me, if I come to your house and ask you to give me 5 mole of water, will you be bringing water there in spoon? Will you bring water there in glass? Will you bring water there in bucket? What is your concept behind 5 mole of water? And by the end of the lecture, I'm sure you should be able to give me the answer to this. Maybe some of you know about what is the, have you understood the question? Because it's very important to understand the question first. If I come to your house and ask you to give me 5 mole of water, आप क्या पानी चम्मच में लाएंगे, या ग्लास में लाएंगे, या bucket में लाएंगे? So these are 3 options with you. And one can certainly think of and what should be the answer that can be discussed later on. And another with this, if I ask you to prepare a solution of oxalic acid, let's say how many gram of oxalic acid you will weigh for preparing 250 milliliter of 1 molar solution of oxalic acid. That is another question which we should be able to solve after the lecture is over. Clarity hai? I fixed the target also. Anyone who can give me, will you bring water there in spoon, glass, or in bucket? Please, let me know what do you know about this. She has described you what is the meaning of mole. So I'm giving a specific example. 5 mole of water अगर लाना है तो क्या स्पून में भर के लाएंगे, या ग्लास में लाएंगे, या बकेट में, बाल्टी में भर के लाएंगे? कुछ आंसर करिए.
आई थिंक साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। भगवान ने 2 आंखें दी हैं, क्यों दी हैं? इसका भी एक लॉजिक है। I think in science, each and every aspect has a logic. So you will have to think very, very logical. You are going to be a very good scientist. You have to go long way, maybe pilot, maybe space, maybe like Abdul Kalam. I think from the grassroots people should come and try to answer. But जब तक ये सवाल नहीं आएंगे ना दिमाग में, हमारे स्किन का कलर ग्रीन क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है, why we don't have a color scheme red, ऐसा इस तरह का क्यों होता है, और मेरे को भगवान ने 2 आंखें क्यों दी हैं, एक आंख से ही काम चलता था, दोनों आंख की क्या जरूरत थी? तो अनलेस यू काम। और हमारे घर में चपाती बनाती हैं माताएं, तो वो फूल कैसे जाती है? आप डो लेते हैं, आटा लेते हो, उसका बना दिया, उसको तवे पे डाल दिया, वो फूल जाता है, वो हवा कहां से जाती है? All these questions should arise in your mind. So coming back to what we have to discuss today, we should be very specific about this. Can I rub this welcome? So we have to discuss first, what do you really mean by the concept called that should be my first objective. Second will be the stoichiometry. We'll be discussing stoichiometry later on, but we'll be starting our concept with mole. Because for chemists, mole is very, very important. आपने मोल का वर्ड कहां सुना है? कब सुना था? When you were in 9th class. कहां देखा था? केमिस्ट्री में पढ़ा था, या कहीं और टेबल में देखा था इसका नाम? मोल है क्या? Is it a unit? Is it a concept? Is it a definition? जैसे आपको पता है काम, work is something, and उसका यूनिट क्या होता है? जूल. Joule is a unit, and the concept is work. You will have to talk of work, and work को express किया जाता है. तो amount क्या ये ऐसा, sorry, जूल जो मोल है, ये एक यूनिट है या फिजिकल क्वांटिटी है? इस फिजिकल क्वांटिटी. अब देख लीजिए, सोच के बताइए. अब यूनिट है, it's not a physical quantity. So whenever you talk of physical quantity, you should have to have a numerical value and a constant. A constant and some unit. Numerical value and some unit. Is mole a constant or a unit or physical quantity? Have you understood the question? I'm sure you all are aware of mole. I'm asking you a question. Is mole a physical quantity? Is mole a unit? Is mole a number? Is it constant? Is constant? Sorry? All three. How it is possible? Because it's constant, because the value of the mole is 6.0. No, constant means number. I'm talking. आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, उसके साथ एक नंबर होता है 5 जूल. 5 इज ए नंबर, जूल इज ए यूनिट, एंड किसका 5 जूल है? वर्क का. वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी. अब मैं और पीछे जाता हूं आपसे बैकग्राउंड में. फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? ये याद है हमको. कैन यू नेम दोस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज? एक मिनट में पहले लिख लूं. Are you getting the concept or not? I am trying you to understand what's the meaning of mole. आपने कहा मेरे को मोल का कंसेप्ट समझना है. That is what is your objective. So we'll have to understand what is the meaning of mole concept. Is it a physical quantity? Is it a unit? It's a number. That's what we are trying to understand first, and then we will try to apply it to our chemical reactions and try to understand what is the real meaning of
mole. So coming back, there are 7 base physical quantities. Please name them. Mass, length, time, temperature. 4. Intensity of light, amount of substance. Amount of substance is physical quantity or not? So you have to understand that one of the 7 base physical quantities is, ये तो 5 बोले हैं अभी आपने, छठी और बोलनी है, 7वीं और बोलनी है, current. So there are 7 base physical quantities, and out of that, one is called amount of the substance. My dear students, the concept is amount of the substance. The definition of amount of the substance should be very clear to you, and it is expressed with a number and unit as MOL. What is the unit for time? आप second लिखते हो, and that is S, not SECOND. Its term is just S, not SEC, not SECOND. Maybe word ये है, जो symbol है, that is S. Time is expressed as unit as second, could be written as SECOND or SEC in short form, but the abbreviation for second is, it is based on some SI based physical quantities, and I am sure you understand what are SI, Standard International का units दिया था, उसमें हर एक unit का एक abbreviation है. Scientists have done a very good job for you people. Make use of them and try to understand. So out of these 7 base physical quantities, one is the amount of the substance expressed in mole, which is the unit. So mole is not a physical quantity, mole is unit and is abbreviated as MOL, not even MOLE. Please ध्यान रखिएगा जब भी आप आगे लाइफ में यूज करेंगे, MOLE is a word. जैसे SEC आपने शॉर्ट फॉर्म कर दिया सेकेंड का SECOND, बट एब्रीविएशन क्या है? ऐसे ही अगर मैंने लेंथ की बात की है, length is expressed in SI unit as meter and abbreviated as small m. ऐसे ही temperature is expressed as Kelvin and written as not K but capital K. So you should be very, अगर आपको अभी मौका मिले तो SI का पूरा कन्वेंशन की बहुत अच्छी बुक है जिसमें सारे पैरामीटर्स का, सारे फिजिकल क्वांटिटीज का बहुत अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट दिया है. तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, उसको अगर आपने बहुत तरह से समझना है तो आपके यूनिट्स में कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए. Unless your concept behind units is not clear, I'm sure that your final result will always be wrong. आपको फाइनल रिजल्ट अच्छा लाना है, इसलिए आप यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखिए. सो मैं वापस आ जाऊं कि 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसमें एक है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एज ए कंसेप्ट. Amount of the substance is expressed as whatever the student has expressed. It is some number. Amount of the substance is proportional to some number of identity. जैसे अगर ये नंबर 12 है तो मैं उसको क्या बोलता हूं? मैं डजन बोलता हूं. 1 दर्जन बनाना दे दीजिए, मीन्स 12 बनाना दे दीजिए. If I ask you to give me 5 dozen, तो you will give me. ऐसे ही एक अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को अगर हमने एक्सप्रेस करना है तो वो नंबर 12 नहीं होना चाहिए. It number should be some proportion to number of identity, and that has been found out by chemists. इतने नंबर होने चाहिए जितने C12 के 12 ग्राम में. अगर मैं 12 ग्राम ले लेता हूं एक C12, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड C12 का मतलब क्या होता है. एक उसका एलोट्रोप है, इसलिए आप C12 पिक करिए और उसके 12 ग्राम ले लीजिए और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करिए, उसको मैं मोल एक्सप्रेस करूंगा. दैट अमाउंट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज 1 mole. So 1 mole is equivalent to what? Number of so many carbon atoms
which are identical to C12 taken as 12 ग्राम और 0.012 kg स्पेसिफिकली याद करते हैं. एंड आपने देखा बेस फिजिकल क्वांटिटीज में मास इज एक्सप्रेस्ड इन kg, बट ऐसे यूनिट्स में कोई भी प्रीफिक्स लगा सकते हो, कोई भी प्रीफिक्स निकाल सकते हो, बट यू शुड ऑलवेज यूज वन प्रीफिक्स. मिली किलोग्राम नहीं लिखना, यू शुड ऑलवेज राइट एक ही प्रीफिक्स. मिलीमीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, बट डू नॉट राइट टू प्रीफिक्सेस. मिली किलोग्राम नहीं लिखना. Try to write only one. That is again a convention of essay. So coming back, एक मैं amount of the substance express करता हूं, कितने number of amounts, कितने number of identity which are identical to C12, and the chemists have found out this number comes out to be equal to इतने. अगर मैं नंबर काउंट कर लेता हूं किसी भी चीज के, that should be expressed as amount of the substance as 1 mole. जैसे मैंने कहा अगर एक केल्विन टेम्परेचर है which is equal to 1 by 273.16 degrees Celsius, which I have a feeling. Similarly, if I count so many number of anything, can you think of 1 mole of cricket ball? You know a cricketer, Sachin Tendulkar, and he plays with some ball. Can you pick up so many cricket balls? But if I pick up so many cricket balls, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? Amount of the cricket ball is 1 mole. There's no harm in using that. But that is a larger number. But molecules are very very small. इसलिए मैं 6.02 अगर पिक करता हूँ molecule, तो उसका कोई mass होगा. But mass is not exactly amount. You can express amount in mass. You can express amount in volume also. इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं 5 मोल आपसे पानी मांगता हूं तो आप क्या स्पून में लाओगे, ग्लास में लाओगे या बकेट में लाओगे? ठीक है, तो it's not a amount which is it's not a mole which is really important. It is the amount of the substance which is, and that number come out to be 6.02. कुछ और भी नंबर है, but approximately we have been using it is 6.02 into 10 to the power 23. Either atoms or ions or molecule or anything. It could be cricket ball, it could be football, but procuring so many footballs, it will be housed there in a very big place. You will not be able to store them. But if you really want to pick up so many water molecules, it will be housed there in either spoon, या glass, या bucket. इसमें आ सकता है, यही ऑप्शन है आपके पास 3. हमने ये तो नहीं कहा पूरा समुद्र होगा, ऐसा तो सवाल नहीं था, आंसर ये नहीं है. उसने ये कहा था कि एक स्पून में लाना है या ग्लास में लाना है या बकेट में लाना है. सो ये इजीली एक्सेस है. सो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस क्लियर है या नहीं? मैं आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द फाइनल डेफिनेशन, रट्टा नहीं करवाना चाहता हूं. जैसे मैं एक डजन को स्पेसिफाई करता हूं 12, ऐसे ही मैं एक मोल को स्पेसिफाई करूंगा 6.02 into 10 to the power 23. It could be ions, it could be atom, it could be molecule, it could be cation, it could be anion, it could be cricket ball, it could be student also. So we can say we have picked up 1 mole of the students, but that will be so big number. उनको house करना will be very very difficult, and you all know the molecules or atoms or ions are very very small quantities, and that is why we are really bothered about amount of the substance. Amount of the substance is one of the 7 base physical quantities. इसको केमिस्ट्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने कुछ रिएक्शंस किया होगा, 1 mole of हाइड्रोजन बोलते हैं, reacts with 1 mole of chlorine, and you'll be getting 2 mole of HCl. So आप कुछ ऐसे मोल के टर्म में बोलते हैं ना, but we do not use this term when we use a general. We don't say 1 mole of table. We do not say 1 mole of water bottle. We do not talk of 1 mole of students because that is not needed. But please understand, you can talk of
जैसे डजन को करते हो ऐसे एक मोल को कर सकते हो. 1 मोल इज 6.022 into 10⁻23 एनीथिंग. क्लियर है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर मेरे को एक मोल कोई भी सब्सटेंस लेना है, उसका मैं क्या करूं? मैंने कहा एक मोल पानी दे दो. तो शुड यू गो टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स and find out 6.02 into 10⁻23 molecules of water and give that to me? Ye lo sir. You will have to count them, but amount can be expressed in mass. It can also be expressed in volume. So let's try to pick up first the mass of a mole. आपने मेरे को कहा अभी कि अगर मैं C12 के 12 ग्राम ले लेता हूं तो उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसको मैंने मोल बोला है. तो कितना मास हुआ कार्बन एटम का? इतने मोल्स के लिए, इतने मॉलिक्यूल्स के लिए, इतने एटम्स के लिए. इज द क्वेश्चन क्लियर? मैंने आपने एक्सप्रेस भी किया, इस लड़की ने भी एक्सप्रेस किया कि C12 का अगर 12 ग्राम लेते हैं तो जो अमाउंट आएगा दैट इज एक्सप्रेस्ड एट अमाउंट और मोल. दैट मींस दिस शुड बी 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स. उसका मास कितना है? 12 ग्राम. तो आई कैन से व्हाट इज 12 ग्राम फॉर कार्बन? इट्स a mass of 1 mole of, and that is what is called expressed as molar mass. What is molar mass? Molar mass is the mass of 1 mole of any substance. आप C12 से कंपेयर करोगे. अगर मैं कहूं कितने मोलर मास होगा हाइड्रोजन का और पानी का? What is the molar mass for water? It should be 18 grams. So your amount should be expressed in mass. अगर मैं कहूं 1 mole of water means, अब आप मेरे को बता सकते हो कि 5 मोल पानी कितना लाओगे? 18 into 5 gram of water you will be bringing for me. That should be 90 gram. And what is the density of water? Value क्या होती है? 5 मोल अगर मैंने पानी मांगा है तो आप मेरे लिए लाएंगे 50 ग्राम. कितने मिलीलीटर? Density of water is 1 gram per milliliter. Density of water is 1 gram per milliliter. My dear students, please try to understand how to write down the units. Gram should be expressed as just G, not GM. किताबों में लिखा होता है, कोई बात नहीं, लिखिए, बट कंसेप्ट समझ लीजिए. Coming back, density of water is 1 gram per milliliter. Gram is written as G. Unit है ग्राम. सिंबल क्या है? कोई भी प्रीफिक्स लगा सकते हो, किलोग्राम, मिलीग्राम. That is also acceptable as a unit. The milliliter is expressed like this. So if I want to convert this gram into milliliter, what I have to do? I have to divide it by density. 1 gram and 1 gram cancels out. आप कितने ग्राम मिलीलीटर लाओगे? तो आप मेरे लिए पानी 5 मोल स्पून में लाओगे, ग्लास में लाओगे या बकेट में लाओगे? ग्लास में लाओगे. अप्रोक्सीमेटली 90 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर का आपका एक ग्लास होता है, उसमें इतना अप्रोक्सीमेटली पानी लाते हैं. इज द कंसेप्ट बिहाइंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस क्लियर और नॉट? आप 12 ग्राम सॉरी 1 डजन अगर आपने बनाना लिया तो उसका मास कुछ होगा, और 1 डजन अगर मैंने ऑरेंज लिया तो उसका मास कुछ और होगा. 1 डजन अगर मेरे पास स्टूल है उनके मास कुछ और होंगे. 1 डजन ये मिनरल वाटर की बॉटल है उनके मासेस डिफरेंट होंगे. तो सभी के एटम के, मॉलिक्यूल्स के, आयंस के मासेस विल बी डिफरेंट फॉर 1 मोल. एंड दैट्स व्हाट यू हैव एक्सप्रेस्ड. 1 मोल ऑफ कार्बन मींस 12 ग्राम. 1 मोल ऑफ वाटर मींस, so and that is expressed as molar mass. So is the concept behind molar mass clear or not? What is the unit of molar mass?
What is the unit for? If I ask you what is a molar mass for water, आप क्या लिखोगे? हाँ जी, U क्या है? No please, बहुत बेसिक 7 मेरे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसी में मेरे को एक्सप्रेस करना है. आपको फोर्स करते हो, फोर्स इज इक्वल टू ma. न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस इन द बेसिक थिंग्स. आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सेलरेशन को मीटर सेकंड स्क्वायर कर सकते हो एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऐसा बेसिक्स में बताइए कि अगर मैं मोलर मास पूछता हूं, मोलर मास ऑफ वाटर मींस व्हाट? आपको मैं सवाल देता हूं, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ, लिखिए व्हाट इज द मोलर, राइट डाउन मोलर मास ऑफ वाटर. लिख लिया? क्या लिखा? यू तो मैं पढ़ा ही नहीं मैंने अभी तक. 18 ग्राम पक्का? मोलर मास ऑफ water is 18 gram. And what is the mass of water? मास तो एक बात नहीं की, मैंने मोलर मास की बात की है. हाउ विल यू एक्सप्रेस द यूनिट फॉर मोलर मास? एक मोल किसी भी सब्सटेंस को मैं मास के टर्म में लिखूंगा तो उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? मोलर मास ऑफ वाटर शुड बी रिटन एज 18 ग्राम. एक मोल में 18 ग्राम होना चाहिए. दैट इज द यूनिट फॉर मोलर मास. एंड मोलर मास फॉर वाटर इज, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यू, मे बी बुक्स में आपको लिखा होता है कहीं यू, तो अभी हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. बट अभी तक समझ आ रहा है ना आपको कि मैंने 6.02 इंटू 10⁻23 कुछ भी लिया है, उसका अगर मैं लैब में जाता हूं, मास निकालता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये मास किसका होगा? एक मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. इसको मैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बोलता हूं. 1 मोल मींस सो मेनी आइडेंटिटी, इट कुड बी एनीथिंग. तो मोलर मास फॉर वाटर अगर आपने कभी लिखना है, कभी भी आगे फ्यूचर में, आप क्या लिखेंगे? पक्का कंफर्म कर रहे हो? जब किताबों में जाओगे फिर कहोगे कुछ और लिखा हुआ है. बट कुछ भी लिखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. आगे बढ़ो. तो आई हैव आस्क्ड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोल. आपको समझ आ गया? मान लो मोल का कंसेप्ट समझ आ गया. मोल तो यूनिट है ना. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मोल एंड द यूनिट इज MOLE एंड एब्रिविएटेड एज MOL. जैसे ग्राम इज अ यूनिट, GRAM, बट एब्रिविएट करते हैं G. कोई भी प्रीफिक्स, मिली मोल कर सकते हो, मेगा मोल कर सकते हो, कुछ भी प्रीफिक्स समझते हैं ना. प्रीफिक्स का मतलब समझते हैं ना. किलो इज 10⁻3, सेंटी इज 10⁻2 and so on and so forth. Deci is 10⁻⁻, and so on and so forth. These are the prefixes. But please, my dear students, अगर concept learn करना है तो हमेशा एक prefix लगाइएगा, 2 इकट्ठे prefix मत लगाइएगा. मिली किलोग्राम कभी नहीं लिखना, which should be equal to gram. Milli kilogram means milli is 10⁻3. This and this cancels out, comes out to be gram. So you should never write down to more than 2, कभी भी नहीं लिखना, सिर्फ आप एक प्रीफिक्स लिखेंगे. आगे बढ़ो. फिर आपसे सवाल पूछूंगा, and it is the concept which I would like to put in your mind, and that should go in your blood. Once the concepts are clear, आप कुछ भी करिए, यू यूज करिए, ग्राम यूज करिए, कोई भी यूनिट मत करिए. I am not really bothered about that, but the concept should be very, very clear. Next is, अगर मैंने कहा कि molar mass of water is 18 gram, you have been invariably coming across with some other kind of parameters, and that is called molecular mass. नाम सुना है? मैंने मोल समझा दिया आपको. मैंने मोलर मास का मतलब मैंने कहा कि मोल को मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं. दैट्स कॉल्ड मोलर मास. क्योंकि मैं मास की फीलिंग रख सकता हूं, बिकॉज बैलेंस से मास निकलता है. और मैंने मास को आपको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करके बता दिया कि ग्राम्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा. और आप डिवाइड जब करेंगे तो यूनिट काटिएगा. दिस ग्राम एंड दिस ग्राम कैंसल्स आउट, एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस एज
मिलीलीटर -1 ऊपर चला जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी मिलीलीटर पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूलर मास को कौन एक्सप्रेस करेगा? वी विल डिफाइन मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास मैंने डिफाइन कर दिया, कुछ मैं कुछ आप, ठीक है, तभी तो बात बनेगी, अदरवाइज तो एक तरफ का इसे पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, तो फिर तो एक साइड वाला ही है। बट वी शुड हैव एन एक्सचेंज बिकॉज केमिस्ट्री डील्स विद डायनामिक इक्विलिब्रियम। जितनी रफ्तार से आप सवाल पूछे उतनी रफ्तार से मैं भी पूछूं तो मजा आएगा, then it will be a dynamic equilibrium. So who will tell me what do you really mean by the term molecular mass? इसको काट दो ना, ठीक है जी। Who will define molecular mass? अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाइएगा, ये घुमा फिरा के जो बताया वो नहीं समझाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल वे। What do you mean by the term molecular mass? और अगर आप नहीं डिफाइन करना चाहते तो आप पानी ले लो, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है? सवाल ये भी है, चलो 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 8। सोच के बताइएगा, ये कंसेप्ट वाली क्लास है, इसमें कोई बहुत जल्दी नहीं है, टक टिक करने वाला टाइम अभी बहुत है हमारे पास, बट यू विल हैव टू लर्न दैट टेक्निक आल्सो सो दैट यू शुड बी प्रॉम्प्ट। Ultimately, we would like you to be trained to that stage where you can quickly give the answer. Okay, molecular mass we will define in a simple language. मैंने समझाया है, अगर मैं 1 मोल कोई आइडेंटिटी लेता हूं, उसका मैं मास लेता हूं, तो उसको मैं मोलर मास बोलता हूं। अब आप मेरे को ऐसे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बता दीजिए कि मॉलिक्यूलर मास में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। Molar mass is defined as mass of 1 mole means so many. अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं H2O का, तो एक मॉलिक्यूल उठाता हूं तो उसको क्या बोलता हूं? मॉलिक्यूल। उसका मास कितना है? दैट शुड बी मॉलिक्यूलर मास। आपने कहा 1 मोल मींस 6 पॉइंट, इतना मेरे पास है बहुत ज्यादा, उसमें से अगर एक मेरे पास मॉलिक्यूल है ना, इसका मैं मास ले आता हूं तो दैट शुड बी कॉल्ड एज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू विल से molar mass of water is also 18 and molecular mass of water is also 18, so 1 mole is equal to 1 molecule. So what is the molecular mass of water? So one molecule. What is that value? What is the molecular mass? Is that clear or not? अगर मेरे पास ये 6.0 की बॉटल्स हैं तो मैं कहूंगा 1 मोल मिनरल वाटर का मास इतना है। 1 मिनरल वाटर का बॉटल कितना का मास होगा वो मैं कहूंगा 1 उठाया, इसका मास निकाल लेता हूं। अब मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है पानी, उसका मास कितना, उसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, यही बोलना चाह रहे हैं ना? सो मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। What do you feel should be the mass of a molecule of water? Specific पूछ रहा हूं, इतना सोचने की बात तो नहीं लग रही मेरे को। आपने कहा मेरे पास इतने कितने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के? 6 पॉइंट, इतने मॉलिक्यूल थे, उसका मास 18 ग्राम था। इसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल लो, उसका मास निकाल लो, that should be the mass of a molecule, that should be molecular mass. Sorry, The mass of one molar mass equal to molecule. that's what is expected. It is 18 gram per mole divided by, very correct. आप तो बहुत होशियार हो गए हैं अब। तो कितना मास हुआ? Approximately 3 gram, 3 into इतना छोटा है, 10⁻⁻23 ग्राम। 1 ग्राम का फीलिंग हो सकता है? कभी देखें फ्रैक्शनल वेट्स लेबोरेटरी में? फ्रैक्शनल वेट्स, 1 ग्राम वेट बॉक्स देखा? लकड़ी वाला, उसमें कौन कौन से वेट्स होते हैं? उसमें सबसे छोटा वेट होता है 1 ग्राम का, उसके ऊपर कोई जो लगा होता है पकड़ने के लिए, आप फोर्सेप देते हैं उससे पकड़ लेते हैं।
1 ग्राम से नीचे जाना है तो क्या होगा, उसको फ्रैक्शनल वेट्स बोलते हैं। वो छोटी सी डिब्बी आती है, उसमें होता है 500 मिलीग्राम का। 1 ग्राम से पहले आता है 500 मिलीग्राम, फिर 200 मिलीग्राम, फिर 100 मिलीग्राम, फिर 50 मिलीग्राम, फिर 20 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। अरे आपको आता है 10 मिलीग्राम से नीचे भी होता है, एक आता 5 मिलीग्राम का होता है, बट दिस इज सर्टेनली लेस देन 1 मिलीग्राम ऑल्सो, which is very, very less. I can't have a feeling of that mass. And that is why the chemists have given you the concept of 6.02 into 10 to the power 23. आपको 18 का फीलिंग है या नहीं है, 18 ग्राम का, but you don't have a feeling of this many gram. But that is a mass of a molecule. So what is a molecular mass? Mass of a molecule, which should be very, very less. इसलिए मैंने केमिस्ट्री वाले ने एक मोल का कंसेप्ट दिया है। तो जो मैं मास लूंगा एक मोल का, उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, उसको मैं स्टडी कर सकता हूं, उसको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, उसको मैं विजुअलाइज कर सकता हूं। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर वाटर? 3 into approximately 3 into 10⁻⁻। किताबों में मॉलिक्यूलर मास आपको पानी का मिलेगा 18, बट मैं कोई उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर है कि उन्होंने गलत लिखा है। 18 मास क्या है? इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? आप यूज करिए किताबों में जो लिखा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, बट आप समझ के करिएगा। सो सेकंड टर्म आई हैव इंट्रोड्यूस यू इज द मोलर मास, थर्ड इज द मॉलिक्यूलर मास, एंड द फोर्थ इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये 3 वर्ड आप लोगों ने बहुत पढ़े हुए हैं और यूज किए हैं, molar mass, molecular mass, and very good. Is abbreviated as RMM. Who will define relative? सुना हुआ है ना ये वर्ड, relative molecular mass, या कुछ किताबों में molecular weight लिखा होता है। molecular weight का नाम सुना है ना? molecular weight, molecular weight नहीं सुना? Anyway, relative molecular mass सुना है? relative molecular mass क्या होगा? What will be the relative molecular mass for water? ये मत कहिए भी अब, क्योंकि आप तो अब 11वीं को काफी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, और ये बात तो शायद 10th से शुरू हो जाती है। मॉलिक्यूलर मास कैसे है, मोलर मास कैसे डिफाइन किया जाता है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज तो शायद 9th से पढ़ते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि इसका मतलब क्या। फिर मोल कंसेप्ट समझते हैं, मोल कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी है, मोल इज नॉट ए, इट्स ए यूनिट, इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिव टू C12। C12 के रिलेटिव जो भी मास आएगा उस सब्सटेंस का, उसको मैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहूंगा। इसकी वैल्यू फॉर वाटर कम्स आउट टू बी 18। इट्स रिलेटिव मींस इट शुड नॉट हैव एनी यूनिट। किसके रिलेटिव अगर होता तो रेशियो निकालते हैं, and that should be 18 as the relative molecular mass for water. And what is the molar mass for water? It's 18 gram per mole. And what is the molecular mass for water? This is 3 into 10⁻⁻23 gram, approximately, not exactly. And what is the relative molecular mass for water? It's 18 without any. And invariably, people have been using this relative molecular mass as molecular weight. But that concept is gone. Weight is a force. हम इसको मास की टर्म में बात कर रहे हैं, तो इसलिए दिस टर्मिनोलॉजी इज नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। ये वाली टर्मिनोलॉजी आजकल यूज ही नहीं किया जा रहा। एसआई कन्वेंशन में बहुत स्पेसिफिक हैं। इफ यू जस्ट सी एसआई कन्वेंशन, एसआई समझ गया ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, उसकी कन्वेंशन है। आजकल हम लोगों को वो फॉलो करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। एसआई कन्वेंशन को हम लोगों को, सब लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर फॉलोइंग एसआई कन्वेंशन। सो प्लीज रिमेंबर, मैं आपको सिर्फ 4 टर्म के बारे में बताया है अभी तक। One is called mole, which is amount of the substance.
another is molar mass, molecular mass. आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, किताबों में कुछ भी लिखा हो relative molecular mass of water is 18 ग्राम, तो आप समझ जाएंगे कि गलत लिखा हुआ है. It should be, and किताबों में लिखा होता है molecular mass of water is 18. You know it is, no, it's a molar mass. Molecular mass is approximately 3 into. लड़ाई मत करिएगा उन ऑथर से कि आपने गलत लिखा है. Don't go to NCERT and say कि आपने गलत लिखा है. बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते. मे बी जब वो लिख रहे हो तो उस टाइम क्या कन्वेंशन था, और मे बी दे आर फॉलोइंग द सेम कन्वेंशन एट दिस स्टेज ऑल्सो. बट दैट शोज कि हमको कंसेप्ट समझ आए, सिंपल वे में मेरे को उस वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइंस में हर एक चीज का लॉजिक है, इवन वर्ड का लॉजिक है. एक वर्ड अगर मैं लेता हूं तो उसका भी लॉजिक है. अब जो जितने भी आप लेते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये आपको वो पीरियोडिक टेबल में मिल जाता है. ठीक है, आपको कहीं बोला जाएगा एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास. अगेन प्लीज रिमेंबर, अगर मैं 1 मोल एटम लेता हूं तो मैं उसको एटॉमिक मास नहीं बोलना चाहता हूं, इसको मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ इस एटम का ये मास है. So there's no harm in using 1 mole of carbon atom, 1 mole of neon atom, 1 mole of argon atom. We can say 1 mole of oxygen molecule. We can also talk of 1 mole of carbon dioxide molecule, because that is molecule. We can talk of in water, concentration of H positive ion is 10⁻⁷ mole per liter. तो मैं ions का भी मोल की बात कर सकता हूं. It could be cation, it could be, I can talk of mole of bigger particles which are called macroscopic things. Cricket ball and table and chair and girls, boys, students and so forth. I can use it, but वो visualize करने में difficult होगा. इसलिए 1 mole का concept is visualized there by and large there in chemistry. अगर ये clear है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. आपने मोल समझा है, आपने मोलर मास समझा है, आपने मॉलिक्यूलर मास समझा है, आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास समझा है. ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में. Any doubt till this stage as far as these 4 terms are concerned? Amount, molecular mass, molar mass, relative molecular mass. Sure. Is the numerical value of molar mass and relative molecular mass is equal? Exactly. The numerical value of relative molecular mass and the molar mass, the numerical value, that will be identical. But molecular mass किताबों में identical मिलेगा. अगर आपको मिलेगा molecular mass of water 18 मिलेगा books में. But you know, as a some kind of different students, that this is not 18, it is around 3 into 10⁻⁻. But books में मिलेगा. इसलिए don't get yourself confused with this. और ये concept है. That is what I have been telling you. Any other question in view of these 4 terms? या एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है. हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड है. आपको कोई चीज को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. इसके रेस्पेक्ट में ये होना चाहिए. इसलिए C12 ओरिजिनली जो किया गया था उसका काम किया है, उसको स्टडी किया. एंड इट्स नॉट 6.022 into 10⁻23 इज नॉट एज सच. ऐसा नहीं आया है, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है. एंड दे फाउंड दैट इतने मोल का एक आइडेंटिटी है या मोल का जो मास नंबर होगा, दैट विल कम आउट टू बी दैट. सो कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड के बेसिस पर आप आगे बात करते हैं. दैट इज व्हाट इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड. इजिली अवेलेबल था, स्टार्टिंग में इजिली अवेलेबल था, इसलिए आपने उसको एज स्टैंडर्ड ले लिया. आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है, उसमें H पॉजिटिव आयन का हाइड्रोजन का लेते हो, बिकॉज दैट वाज इजीली अवेलेबल, इसलिए यू चूज दैट एज ए स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई समवेयर यू विल हैव टू स्टार्ट. आपने कहना है कि मैं C12 काउंट तो नहीं कर सकते. यू हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट. एंड Na, which is called Avogadro's constant, is not an Avogadro's number.
It is an Avogadro's, and that was determined experimentally as 6.02 into 10 raised to power 23 per mole. नंबर और कांस्टेंट में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए. नंबर इज 6.02 into 10 to the power 23 and constant is 6.02 into 10 to the power 23 per mole. So Na is termed as Avogadro's constant. Not Avogadro's number. Please, आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी. किताबों में कुछ लिखा हो, आपने समझना आना है कि मेरे पास ये एवोगैड्रो नंबर नहीं है, दिस इज एन एवोगैड्रोस, क्योंकि इसकी एक यूनिट है विच इज मोल पर मोल, मोल इनवर्स. और एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, यहां पे समझाना चाहता हूं कि कोशिश करें एज फार एज ये रेज़ टू पावर -1 लिखने का. आर पढ़ चुके हैं, गैस कांस्टेंट, उसका यूनिट होता है, वैल्यू होती है 8 पॉइंट जूल पर केल्विन लिखते हो पर मोल. अगर आप स्लैशेस को लिखोगे तो स्लैशेस में कंफ्यूजन है. आई लेट मी टेल यू दैट. अगर इसको मैंने ऐसे लिखा है जूल पर केल्विन पर मोल, दैट मींस व्हाट? दिस मींस जूल मोल डिवाइड बाय K. Is that correct or not? Which is wrong. So as far as remove these slashes, don't use these slashes. You should use joule per Kelvin. That is the right way of expressing the units. As far as avoid slashes, ये आपको साथ में सब्सिडी में कुछ चीजें मिलती जा रही हैं. Not with respect to mole, not molar mass, but कुछ साइड में आपको perfection के लिए we are moving towards that. So please avoid slashes. Try to use raised to power -1 or something of that kind. Should I proceed further? या कुछ आपके इसके सवाल हैं? और ये नंबर जो है that is experimentally determinable value. If you feel like I can give you the procedure how it is being done. उसके लिए आपके पास एवोगैड्रोस लॉ पता है? आपने गैस लॉ बना लिया है? PV = nRT बता दिया? कुछ हाफ हार्टेडली बोल रहे हैं. PV आपने नहीं किया. PV = nRT ड्राइव कर लिया. उसमें R क्या है? उसमें एवोगैड्रोस लॉ कहां यूज किया था? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कहां यूज किया था? व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? इक्वल नंबर ऑफ, अभी मॉलिक्यूल्स की बात करोगे या आइडेंटिटी की बात करोगे? विच इज करेक्ट. अगर मैं कहता हूं कि सारे सब्सटेंसेस, प्लीज बैठ जाइए, इक्वल वॉल्यूम लेते हैं अंडर ए कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, all the gases will occupy same number of identity, and that same number comes out to be equal to 6.02 into 10 raised to power. ये experimentally determinable value है. This can also be found out with the help of electrochemical method, and this is how the value of Na. My dear students, scientists have done a wonderful job for us. वो करके छोड़ के गए, आज भी उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते. Because at that time, जब computers were not available, no facilities were available, and at that time people have done so many calculations. p orbital की shape देखिए, देखिए किताबों में कभी ड्रॉ किया? कैसे ड्रॉ किया? ऐसे कर दिया. Do you know the mathematics behind this? जिसने पहली बार किया होगा, बहुत देर पहले, तब कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे. आजकल आप कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग कर देते हैं, फटाफट प्लॉटिंग कर देते हैं. But please appreciate those scientists who have done a wonderful job long time back, and अभी भी हम उनको यूज कर रहे हैं. Laws, they were designed long time back, Boyle's law, Charles' law. So Avogadro's hypothesis say I can really find out this value, and it says all the gases, if you pick up the same volume under the same condition of temperature and pressure, and that question again comes, C12 क्यों लिया है? वहां पे जो टेम्परेचर था that is 273 Kelvin and the pressure was 1 atmosphere, and all these
gases will contain 22.4 liter of the volume. And जितने भी 22.4 liter volume occupy कर रहा है उसमें number कितना आया? It came out to be 6.02 into 10 to the power 23. It's an experimentally determinable. Now she can ask a question, why you have taken temperature as 273? But you have to take some standard. But that doesn't mean you up 298 नहीं ले सकते थे. You could have taken that. But once we have taken it, we will take that as a standard. So C carbon is taken as a standard, and that's why we have been designing all the basic elements there in periodic table. सारे के सारा जो उसके आप ले सकते हैं, then you will have to say it's a new periodic table with these as atomic masses, these as molecular mass, and these as atomic number, and so on and so forth. So everything will be changed. So इसलिए we should stick to that terminology which our previous scientists have been using. Should I proceed further? A very few things I am picking up, and then I will try to give you some numerical problem also, and then you will have to do this problem with your own hand. मैं यहाँ नहीं करूँगा, फिर वो नकल कर लेंगे, आप फटाफट नोट कर लेंगे और कहेंगे हमने किया है. तो आप करेंगे और तब आपको समझ आएगा, and then you will be able to understand what is going on. So let me now try to tell you some more things, aspects with reference to amount. आपने कहा कि मेरे पास मैं एक मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं, इट्स मोलर मास. अब मैं इसको अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को कुछ टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी, एंड दे आर कॉल्ड कंसंट्रेशंस. Since we are talking of the concept of mole, the concentration will be expressed here in terms of mole. Concentration means मैंने कुछ अमाउंट लिया है और कुछ सब्सटेंस में डाल दिया है. आई हैव टेकन सम अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम क्लोराइड लिया 1 ग्राम और 100 मिलीलीटर में पानी में डाल दिया. तो इस टर्म को मैंने डिसॉल्व कर दिया, मेरे पास क्या बन गया? इट इज ए सॉल्यूशन. एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर, अगर मैंने कुछ छोटा सा अमाउंट डालता हूं उसको सॉल्यूट बोलता हूं, जो लार्जर अमाउंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं. उन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो यू विल बी गेटिंग ए. उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है? व्हाई डू यू वांट टू यूज दैट कंसंट्रेशन टर्म? दैट्स व्हाट आई विल डिस्कस दैट वेरी सून. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कंसंट्रेशन इज द अमाउंट of the substance dissolved in some volume of the either solution or solvent. And for this, the first term is used, molarity. Molarity of the solution is defined as the amount per unit volume of the solution or per liter of the solution. So concentration is defined as amount per unit volume. अगर मैं कहता हूं मैं पर यूनिट वॉल्यूम और 1 लीटर मैंने स्पेसिफिकली सॉल्यूशन ले लिया, सो अगर मैं कहूं आपको मेरे को मोलर सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम क्लोराइड का मैंने वे कर लिया, तो मैं कितना पानी डालूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन बन जाए? हाउ विल यू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? कुछ वे करोगे, वे करके कितने में डिसॉल्व करोगे? इट्स अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन, तो आप उसको 1 लीटर में बनाओगे या 1 लीटर पानी डालोगे? 1 लीटर में बनाओगे तब इट विल कम आउट टू बी एज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. So please remember, it's the amount of the substance dissolved in 1 liter of the solution. Meaning thereby that, अगर मेरे पास ऐसी कोई फ्लास्क मिल जाती है, ये कुछ मिलीलीटर का पक्का है, यहां मैंने मार्क लिया है, I will be weighing that much of sodium chloride and make up the solution till that mark, because I want to make a molar solution. I will not be adding 1 kg of the solvent. If you want to add 1 kg of the solvent, that is termed as molality of the solution. Molality is defined as the amount dissolved in 1 kg of the solvent.
समझ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला भी, कंसंट्रेशन। Let me try to express you what is the meaning of molarity and how it should be prepared. Molarity, you have understood, is the amount. Amount can be expressed in gram. Am I correct? पक्का है ना, समझ आ गई है ना? As such, amount should be expressed in mole. But वो मैं 6.02 काउंट नहीं करूंगा. I will go to the lab and try to weigh. तो मास को ले सकता हूं. एक स्पेसिफिक मास मैंने कर लिया फॉर ए स्पेसिफिक सॉल्यूट, और उसको मैंने एक फ्लास्क ले लिया which is called measuring flask. By and large, you will be studying that volumetric technique very soon, maybe in the third lecture. You will be having a volumetric technique. उसमें एक फ्लास्क होती है. I don't know how many of you have seen it or not. It's a measuring flask. इसके ऊपर स्टॉपर होता है और इसमें एक मार्क लगा होता है. ये जो फ्लास्क है दैट इज लेट्स से 1 लीटर की लिमिट का है. दैट मींस आपने ये जो सोल्यूशन में मार्क है ये 1 लीटर तक आएगा यहां से लेके सारा का सारा. तो यू वांट टू मेक ए मोलर सोल्यूशन फॉर एग्जांपल. उसके लिए आपने स्पेसिफिक वे किया, कर लिया. मान लो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है तो आपने कुछ वे करके लाए और इसमें ट्रांसफर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए फनल. आपने उस मास को इसमें ट्रांसफर कर दिया, यहां पर सॉलिड आ गया. अब आपने इसमें पानी डालना है और इसको सोल्यूशन बना देना है. थोड़ा सा पानी डालें, डिसॉल्व कर लें. सोडियम क्लोराइड मिक्स हो जाता है ना अच्छी तरह से, तो उसको डिसॉल्व कर लीजिए एंड देन ट्राई टू मेक अप द लेवल टिल दिस स्टेज. आप 1 लीटर पानी नहीं डाल रहे हैं, आप 1 लीटर सोल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि आपको क्या बनाना है, कुछ मोलर सोल्यूशन. मोलरिटी इज amount dissolved in 1 liter of the solution. Is that correct or not? So that is, you will be using a measuring flask to measure the volume of the solution, not 1 kg of the solvent. अगर मैं कहूं 1 kg solvent है and density कितनी है पानी की, अगर पानी की बात कर रहे हैं तो solvent 1 gram per milliliter, तो 1 kg means 1 liter. Is that correct? 1 kg is 1 liter. तो 1 लीटर पानी डालना पड़ेगा आपको, एंड दैट विल बी डन इन ए, दैट इज द मोलारिटी. अगर आपने वे कर लिया है और इसमें आपने 1000 ग्राम पानी डाल दिया है या 1000 सीसी पानी डाल दिया है, दैट विल कम आउट टू बी एज molality of the solution. So molality is the amount dissolved in 1 kg of the solvent. Molarity is defined as amount dissolved in 1 liter of the solution. So clear है? अभी थोड़ी देर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में, जैसे आपने कहा आइडियल गैस इक्वेशन, कोई भी गैस इक्वेशन आइडियल नहीं, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है. सारी गैसेस रियल होती हैं. अंडर सम कंडीशंस वो बिहेव करती हैं आइडियल. ऐसे ही सॉल्यूशन भी आइडियल होते हैं. अगर 2 चीजों को मिला देते हैं तो उसको आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं. इन दैट कंडीशन नहीं होती है कि डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0. पढ़ा है? ओ वेरी गुड. सो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मीनिंग देयर बाय दैट अगर मैं एक का वॉल्यूम ले रहा हूं और दूसरे का तो वॉल्यूम डालता हूं तो टोटल वॉल्यूम विल बी B1 प्लस B2. बट इट डजंट हैपन देयर इन सॉल्यूशन. अगर आप सॉलिड वे किया सोडियम क्लोराइड तो आप उसमें 1 लीटर पानी नहीं डालेंगे, आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे. अगर 1 लीटर पानी डालते हैं तो वो क्या बनेगा, मोलालिटी. इतनी मोलालिटी है उस सॉल्यूशन की. दैट इज द कंसंट्रेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी एंड is the concept behind molality clear or not? I can see your blank faces for these 2 terms. समझ आई है नहीं आई? मोलारिटी में आपको कुछ सॉल्यूशन बनाना है. मोलालिटी में आपको 1 kg का सॉल्वेंट डालना है. इज दैट करेक्ट? दोनों में बहुत फर्क है, एंड दैट फर्क इसलिए आएगा बिकॉज डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट 0 फॉर ऑल द रियल सॉल्यूशंस. फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. तो मोलारिटी का कंसेप्ट समझ आया? इतने अमाउंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड मोलारिटी इज इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. 1 kg को मिलीलीटर में कर सकते हो. अगर डेंसिटी है आपके पास तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर मास और मास इनटू वॉल्यूम.
थर्ड एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन में, दैट शुड आल्सो बी नोन एंड देन आई विल कम बैक. यस, that is called mole fraction. थोड़ा सा पहले बता दूं, मोलारिटी इनवेरिएबली इज एक्सप्रेस्ड एट कैपिटल M. इनवेरिएबली मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल M एंड यूनिट क्या होगा? This molality is expressed as small m, and what should be the unit? Mole per kg. बहुत मुश्किल है जब साइंस ऐसा ही कन्वेंशन बनाते हैं, तो कैपिटल M इज यूज फॉर मेगा आल्सो. आपने कैपिटल M यहां पर भी यूज कर लिया, तो बड़ा दिस लॉट ऑफ कंफ्यूजन आई कैन टेल यू. एंड एवरी सेकंड ईयर IUPAC कंडक्ट ए कॉन्फ्रेंस जहां पर ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाता है. एंड इट हैपेंस एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मे बी समटाइम्स इन इंडिया आल्सो. They used, the scientists used to sit, scientists means आप लोग भी साइंटिस्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आपको बुलाया जाता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. उन सबको कंसोलिडेट करते हैं. एंड बाय एंड लार्ज वी आर यूजिंग कैपिटल M फॉर मोलरिटी, which is mole per liter, and small m is being used for mole per. Mole fraction is another term which is being used for concentration, and that is expressed as the ratio of the amount of the substance per total amount of the substance. Substances rather. And amount invariably is expressed as N. N करते हैं PV is equal to nRT में. PV is equal to nRT में आप क्या N को एक्सप्रेस करते हो जरा बताओगे? नंबर ऑफ मोल्स. आप कभी मार्केट में जाते हो, मेरे को नंबर ऑफ डजन 5 दे दो. डू यू से नंबर ऑफ डजन ऑफ बनाना 5 दे दो, आप क्या बोलते हो? गिव मी 5 डजन ऑफ. So why don't you call N as amount of the substance, which should be expressed in? So whenever something is expressed in mole, it should be called as. So number of mole is a wrongly placed word. कभी बोलते हो, बता दो मेरे को, आप ऑरेंज खरीदने जाते हो तो ये नहीं कहते कि हमको 5 डजन, ये बोलते हो 5 डजन बनाना दे दीजिए, 5 डजन ऑरेंज दे दीजिए. You don't say number of डजन बनाना 5 दीजिए या नंबर ऑफ डजन ऑफ ऑरेंजेस 5 दीजिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा सेलर, ये क्या मांग रहे हैं. सो इसलिए whenever you want to talk of amount, it is expressed as N. If N1 is the amount of the first substance and there are two substances together, then N1 plus N2 is the total amount and is invariably expressed as X. X1 is the mole fraction of the component 1 in the mixture, and that is expressed as amount of the first substance divided by the total amount of both these substances together. So इसलिए कहते हैं मिक्सचर कभी होता है सॉल्यूशन का 3 कंपाउंड भी बनाते हो तो उसमें N1 divided by N1 plus N2 plus N3, which should be a total amount. So this is expressed as X1. So these are the invariably termed used for concentration. One is called molarity, another is called molarity, and third one is called gases के केस में invariably we have been using mole fraction. आपने पार्शियल प्रेशर की बात किया है ना, वहां पर जब x की बात किया था वहां पर x वाज पार्शियल प्रेशर. दैट मीन जब गैसेस की बात करते हैं तो आप हमेशा अमाउंट की बात करते हैं, उसमें मोल फ्रैक्शन की बात होती है बाय एंड लार्ज. बट व्हेनेवर यू वांट टू यूज लिक्विड और सॉलिड, वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ कंसंट्रेशन आइदर इन मोलैलिटी और इन मोलैरिटी. जब हम गैसेस यूज करते हैं तो उस केस में हमको मोल फ्रैक्शन यूज किया जाता है बाय एंड लार्ज. दैट डज नॉट मीन कि आप सॉलिड में या लिक्विड में या सॉल्यूशन में
मोल फ्रैक्शन नहीं यूज कर सकते, you can use by and large we have been using mole fraction term there in the gaseous and not in terms of liquids and so on and so forth. So these are the three terms which are being used as the concentration. Why these concentrations? Why do you want to express amount? मैं बात क्या कर रहा हूं? Amount की. आपने कहा amount को तो मैंने express कर दिया था वहां पर. आप हमेशा 5 मोल की बात क्यों नहीं करते हो? आप मोलर की बात क्यों करने लग गए? What is the need of these concentration terms? Because these concentration terms are intensive variables. नाम सुना है? There are two kinds of variables. One is called extensive variable and that is called intensive variables. Intensive variable का क्या advantages होता है कि अगर आपने उसमें से 10 मिलीलीटर भी निकाला है, 10 मिलीलीटर की concentration same होगी, 20 की भी same होगी and so on and so forth. But amount will be different. So that is why there is a difference called extensive. And you, when you study thermodynamics, we will discuss in detail what do you really mean by the terms extensive and intensive variable. समझ आ रहा है? थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि आप कहीं इंट्रोड्यूस किया समझाया नहीं है, तो मैं समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है. एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर एडिटिव, दैट मींस जिसकी वैल्यू मैं एडिशन से कर सकता हूं, एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स आर नॉन एडिटिव. लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट यू विल बी डूइंग, अलग अलग वॉल्यूम यूनिट्स का निकाल लोगे, उनको ऐड कर दोगे, दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम, एंड आई एम कॉलिंग वॉल्यूम एज एडिटिव. It's a extensive variable. If I ask you what is the temperature of this system, you can't find out the temperature of individual units and then add. The temperature will remain same throughout the system. So temperature is intensive variable whose value is not found out with the help of an additive. So intensive ये होता है और extensive होता है अलग अलग का. Masses are also extensive. Pressure पक्का पक्का. इस रूम का प्रेशर कितना होगा अलग अलग ले लूंगा, उसका प्रेशर विल रिमेन सेम इफ इट इज एट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अगर गिर जाएगा तो प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा. इफ द सिस्टम इज एट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर विल रिमेन द सेम. बट आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है ना, उसमें तो ऐड करते हो, एंड आपके सर ने भी बताया कि प्रेशर इज नॉन एडिटिव. करते हो ना, ना P is equal to P1 plus P2 plus P3. ऐसा करते हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में. अभी तो आपके सर ने कहा कि ये एडिटिव नहीं है, अब आपने यहां पे एडिटिव कर दिया है, तो कुछ कहीं गड़बड़ है. तो यहां तो आपके सर ने गलत पढ़ाया है, यहां हमारे कंसेप्ट गलत हैं, या किताबों में गलत है. किताबों में गलत नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है. बुक्स आर वेरी गुड. आपके टीचर गलत बोल सकते हैं. हाँ जी, ना मैं रिएक्टिव को बात ही नहीं कर रहा. आपके इस गैसेस में कोई अगर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब है ना, पार्टी रिएक्ट करती है, कोई हर्ज नहीं है, बट उसको हम इनवेरिएबली नॉन रिएक्टिव कह सकते हैं. अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तभी तो पानी बन रहा है. ह्यूमिडिटी कहते हैं ना, तो पानी बन जाता है. दैट इज पार्टली रिएक्टिव. बट मेरे को आपसे समझना है कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है. अगर आप वो समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर फॉर दिस. सो प्लीज रिमेंबर, प्रेशर इज नॉन एडिटिव. दैट इज कंफर्म, दैट इज 100% श्योर. आपके सर झूठ बोल सकते हैं, बट किताबें झूठ नहीं बोलेंगे. इसलिए किताबों में जाओगे तो लिखा होगा प्रेशर इज नॉन एडिटिव, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल. और बट फिर भी आप ऐड करते हो, क्यों करते हो, उसका आंसर आप मेरे को दोगे जब हम कभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. तो वी विश टू मीट. अभी तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, एक बार कल भी मिलने वाले हैं, but maybe you will not be able to find out the solution by tomorrow, but maybe next time when we meet next week, next to next week, so you will give me the answer to this. हाँ, मतलब क्या है? बट गया है, बट गया है नहीं, बट पार्शियल का मतलब समझना पड़ेगा मेरे को. आपको बट गया मींस यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. अब पार्शियल का मतलब समझा दो क्या है. लेकिन जब हम पूरा प्रेशर निकालेंगे पूरे रूम का, कोई भी सराउंडिंग है, तो उन सबके इंडिविजुअल प्रेशर हम ऐड करेंगे. वही मैं कह रहा हूँ, आपके इस सिस्टम में 3 गैसेस ले लो, सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ले लो, गैसेस आप समझते हैं.
कार्बन में प्रॉब्लम होती है, H2O में प्रॉब्लम होती है, H2 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसका मैं P ऑक्सीजन क्या है, टोटल P इज P ऑक्सीजन प्लस P नाइट्रोजन प्लस P हाइड्रोजन, और छोटा जो P है P हाइड्रोजन वो क्या है, वही पार्शियल प्रेशर है ना, उसका मतलब समझा दो मेरे को इस एनवायरनमेंट में। हाँ जी, मिक्सचर तो है ही ना, दैट्स करेक्ट। वो तो प्रेशर का मतलब ही है कि कितना मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको मैं प्रेशर बोलता हूं। तो घूम ही रहे हैं मॉलिक्यूल। आप क्या कह सकते हो, ये लाल जो रंग का गैस है ये हाइड्रोजन है, पीले का ऑक्सीजन है और नीले का नाइट्रोजन है, ऐसा तो नहीं है। ये दिख रहे हैं कलर्ड, यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी इट। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि ये P हाइड्रोजन क्या है, P ऑक्सीजन क्या है? एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर P इज गिवन एज P ऑक्सीजन प्लस P नाइट्रोजन प्लस P हाइड्रोजन। मेरे को आपसे सिर्फ ये जानना है कि P हाइड्रोजन क्या है, P ऑक्सीजन क्या है। अगर मेरे पास ये मिक्सचर पड़ा है तो तीन ही गैस हैं सिर्फ, और भी होंगी इसमें, तो हम अभी तीन मान के चलते हैं। So please take your time. I am sure you can give us the time. But remember, you have been using your word partial. You will have to understand. डाल्टन ने partial का concept क्या दिया था? अगर वो आप निकाल लोगे, तो you will be able to give me the answer to this. So that is why we invariably in chemistry we have been using intensive variables. आप ज्यादा तक जो जितना भी काम करोगे वो इंटेंसिव वेरिएबल। हाँ जी बोलिए, कोई सवाल है? सॉरी, दैट्स करेक्ट। वो तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन से लगाया है, बट मेरे को पार्शियल, डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर का वर्ड क्यों यूज किया ये समझना है आपसे। अब यू हैव बीन यूजिंग इट, I know you have been using molecular mass of water as 18 also. But now you have understood this is wrong. Molecular mass of water is approximately. किताबों में ठा लिखा होगा, लड़ाई नहीं करिएगा प्लीज। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को मेरे अपने साथी होंगे उनसे लड़ाई करवा दोगे। आई डोंट वांट टू हैव अ फाइट विद माय ओन कलीग्स, क्योंकि दे हैव रिटन बुक एंड दे विल से हमने तो ठीक लिखा है, आपने कैसे बच्चों को। बट कंसेप्चुअली यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज द डिफरेंस। एनीवे, give a thought and then try to come back with the concept behind partial pressure. अगर आप वो दे दोगे तो I'm sure you, and but this is 100% sure that pressure is intensive variable, it is non-additive. ये क्यों हुआ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमको पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट अगर समझ आ जाता है तो मे बी अगर मैं आपको गैसेस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा ही, बट फिर भी मेरे को आपसे पता करना चाहता हूं कि आप कितना समझ सके हैं as far as partial pressure is concerned. So should I rub them off? And I'm sure you have understood amount, the concentrations. And why do we want to talk of concentration? Because in chemistry we invariably talk of the intensive variables. By and large आप काफी कुछ intensive variable के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं based on these 7 concepts which I have discussed. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Should I give you some questions? सोच के समझ के करना है, और हर यूनिट जो भी नंबर लिखोगे उसका नंबर के साथ यूनिट जरूर लिखोगे, so that the final result will never be wrong. गलत नहीं होगा अगर आप उसके नंबर के साथ साथ उसकी यूनिट लिखोगे तो। बहुत सिंपल से सवाल हैं। आपको सिर्फ एक वर्ड का आंसर देना है, ठीक है? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं रिपीट कर दूंगा। यू हैव टू जस्ट गिव मी 1 or 2 वर्ड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा डेफिनेशन नहीं देना है, वेरी स्मॉल। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, ये नंबर 1 है। आप सिर्फ आंसर लिखोगे। सेकंड है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। सिर्फ आंसर लिखना है।
अगर क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। मेरे कुछ पहले वाले उसमें पड़े हैं, उसमें क्वेश्चन आप, आई कुड नॉट ब्रिंग पेन ड्राइव टुडे, माय पेन ड्राइव इज लॉस्ट एंड तो आप पहले वाले से निकाल सकते हो, लास्ट टाइम मैंने दिया था। आप तो नहीं, बाद में निकाल लेना। थर्ड इज number of particles in 1 mole of a substance. The number of particles in 1 mole of a substance. Sorry? सेकंड है सर, आपसे mass of 1 mole of a substance. आप मेरे को बता दीजिए, अगर आप कहीं अटक गए तो मैं दोबारा से सभी तरह बोल सकता हूं। I'm repeating the first, which says the mass of a molecule of a substance. Second is the mass of 1 mole of a substance. Third is the number of particles in 1 mole of a substance. Fourth is the unit of the amount of the substance. The unit of amount of the substance. Fifth is the amount of a substance in 1 decimeter cube of a solution. The amount of a substance in 1 decimeter cube of a solution. 1 decimeter cube of a solution. Decimeter cube लिख लोगे ना? D small m small raised to power 3. Sixth is the amount of substance in decimeter cube on 1 decimeter cube of a solution. ये मैं कुछ 7-8 वर्ड हैं, आपको 1 या 2 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है? आपने कहीं आंसर इसी का नहीं लिख देना ये वाला, तो यू हैव टू गिव मी द रियल आंसर. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. Smith, can I have water, please? The seventh is, हो गया ना? Seventh is the ratio of amount of a substance to the total amount of all the substances present. The ratio of amount of a substance to the total amount of all the substances present. Last, next, last. 7 दोबारा बताना है, हो गया, बस 7 ही हैं, डोंट वरी, बहुत आसान से 7th को रिपीट कर देते हैं, 7th को रिपीट बोल दें. The ratio of amount of a substance to the total amount of all the substances present. ये मैं सवाल के आंसर इसलिए मांग रहा हूं बिकॉज मेरे को खुद जानना चाहता हूं कि मैंने कितना पढ़ाया है आपको. आंसर दे दिया? ये एक दूसरे को बता दो कि किसने कितना किया हुआ है, कुछ रिजल्ट किस किस का कैसा आया है. साथ में से नंबर देने हैं आपने अपने दोस्तों को, एक्सचेंज कर दो और साथ में से नंबर देने. मैं आंसर बता रहा हूं आपको. द मास ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ mass of a molecule of a substance is molecular mass. The mass of 1 mole of a substance is a molar mass. The number of particles in 1 mole of a substance is Avogadro's constant. आपने Avogadro's number लिखा होगा. It should be Avogadro's constant. क्योंकि आपको उसका define करना. So these are the basically definition of those words which you have written down. हाँ जी. तो गलत होगा, आपको बोला गया है पर मोल.
The unit of amount of the substance is MOL, is the abbreviation for MOLE. The amount of, यही है ना next? The amount of a substance in 1 decimeter cube, 1 decimeter cube is 1 liter. Confirm? Proof कर सकते हैं ना? So that is 1 liter of the solution. क्योंकि आप लीटर सिस्टम खत्म हो गया है, मिलीलीटर के टर्म में यूज नहीं करते हैं आजकल. We have been using a metric system. So इसलिए 1 decimeter cube is 1 liter, which is molarity of the solution. The amount of a substance in 1 kg of the solvent is molality. The ratio of amount of a substance to the total amount of all the substance is the mole fraction. आपने क्या लिखा है? मोल रेशियो. मोल रेशियो नहीं लिखना है. It should be specifically the mole fraction. I'm sure you all have done a very good work. You have got the definition of all the words which have been used here in this class. एक मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, प्लीज आप क्विकली नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर इसे डिस्कस करेंगे. Calculate the amount in the following substances. Number 1, 5 gram of methane, CH4. 3.4 gram of hydrochloric acid, HCl. 3.4 gram of hydrochloric acid. Third is 6.2 gram of potassium permanganate, KMnO4. Yeah. मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. आई थिंक यू चेक वेदर द नंबर यू हैव रिटन करेक्ट और नॉट. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. Number 1 is 5 gram of methane, which is CH4, 3.4 gram of hydrochloric acid, and 6.2 gram of potassium permanganate. बिल्कुल करना है. किसी का अगर आपको किसी एटम का या एटॉमिक मास जो बोलते हैं या मोलर मास की बात है पता करना चाहें तो कर सकते हैं. C का you know is 12, hydrogen you know is 1, HCl में H you know is 1 and Cl is 35.5 और 35 भी ले सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा. In KMnO4, K can be taken as potassium as 39, manganese as 54.9. या 55 ले लीजिए. आप सबको मैं थोड़ी देर रोक रहा हूं. प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड and try to understand how will you solve this. It's very simple, no doubt about this, but please plug the units along with the numerical values. The last student, please. If you want to find out how many moles of the substance are there in 5 gram of CH4, you should know what is the molar mass for CH4. So you will have to say the molar mass of CH4 will be equal to 12 plus 4, which should be 16 gram per mole. आप लिखेंगे. अगर आपने अल्टीमेटली बहुत प्रॉम्प्ट करना है तो आपको यूनिट्स लिखनी पड़ेगी अभी. इट विल टेक सम टाइम एट दिस स्टेज, बट आई एम श्योर बाय द एंड यू विल बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट. दिस इज द मोलर मास ऑफ CH4. अब 5 ग्राम में मेरे को मोल में निकालना है. इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 16 ग्राम पर मोल से. दिस ग्राम एंड दिस ग्राम कैंसल्स आउट. It should be 55 by 16 मोल. ऐसा सॉल्व करिएगा जिसमें स्पेसिफाई हो कि क्या अल्टीमेट यूनिट कितनी बन गई है.
And that is what you want to say. Amount of the gas or amount in 5 kg of 5 gram of CH4. So this is how you should do for the rest. Please, you can do it there at own house also. I will ask you to go for the third one. Please write that down. Next problem. Calculate the mass of 0.2 mole of potassium hydroxide. Second part of this is 0.47 mole of nitrogen dioxide. First is 0.2 mole of potassium hydroxide KOH. Second part is 0.47 mole of nitrogen dioxide. 0.47 mole of nitrogen dioxide. 5.2 mole of, third is 5.2 mole of helium. Yes. I will do the first part and the rest you can do there at your own place because you have got the question now. You can certainly solve it there. घर जाके भी करेंगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपको कुछ चीजें याद रहने वाली है, वरना फिर आप भूल जाते हैं. For example, in first it is 0.2 mole of potassium hydroxide. So you will have to find out what is the molar mass for that substance, and potassium is 39 plus 16 plus 1. Am I correct? This will come out to be 9 10 6 3 4 46 or 56. What? आपको मास निकालना है. Mass will be equal to 0.2 mole into 56 gram per mole cancel का ठीक करेगा, and then this will come out to be so many gram. इतने gram. Or please plug the units along with the numerical value. I assure you your final result will never be wrong, and that will come out in an appropriate unit also. कर लोगे ना? इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है. This is a third. I will ask you now to shift to fourth. कर लोगे घर में भी जाके? Yes, good. आप बहुत होशियार होते जा रहे हैं अभी. Yes. It says थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट. Chlorofluoro CFCs are one of the gases that contribute to the depletion of the ozone layer that contributes to the depletion of the ozone layer. A chemist analyzed a CFC and found that it contained 58.64% chlorine. 58.64% chlorine, 58.64, comma 31.43% fluorine, 31.43% fluorine, and 9.93% carbon. What is the empirical formula? मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, आप नंबर डाटा देख लीजिएगा, एंड दैट आई एक क्वेश्चन और दूंगा, बाकी आई वुड लाइक टू डिस्कस सम पार्ट बिफोर वी लीव. दिस यू कैन डू देयर एट योर ओन प्लेस. CFCs are one of the gases that contribute to the depletion of the ozone layer. A chemist analyzed a CFC and found that it contained 58.64% chlorine, 31.43% fluorine, and 9.93% carbon. What is the empirical formula? And last, I will just like to give you that. And please, अगर आपके कोई भी सवाल हैं,
आप उनको हेल्पलाइन में डाल सकते हैं. That should be given to us so that that can be solved for, if it is a, there are number of problems that will be solved collectively. अगर कोई individual थोड़े से limited है तो that will be given online also. But just write on the last one. Okay, this I would like you to do here. What is the concentration of a 150 centimeter cube solution? What is the concentration of a 150 centimeter cube solution containing 5 gram of sodium chloride? 5 gram of sodium chloride. इसको मैं चाहता हूं you do it here and I will demonstrate you there onto the whiteboard. You are supposed to give me what is the concentration of this solution which you have prepared as 150 milliliter. 150 centimeter cube is 150 milliliter. Is that correct? And containing 5 gram of sodium chloride. आपके पास solution है 150 मिलीलीटर जिसमें 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है. उसकी concentration क्या है? Molarity क्या है? कितनी है? Please do it here. I will give you some time and then I will go to the whiteboard and try to solve it for you. कितना है? 100 by 205.5 molarity. Is molarity. Okay. M है. Just wait. Can I see what are you doing? Can I have this? ठीक है, 5 by 150. क्यों किया है? 5 को 150 से डिवाइड क्यों किया है? बता सकते हैं? You understand हिंदी? हाँ, आपने 5 by 130 क्यों किया है? 150 क्यों किया? तो ये 5 तो ग्राम है, मास है ना, अमाउंट तो नहीं है. अमाउंट क्या होता है? मास होता है क्या? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का यूनिट क्या होती है? तो ये तो ग्राम है. और यही मैं आई थिंक पूरा क्रक्स ये है कि आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अमाउंट एंड मास. हो गया? ये क्या है? 5 by 68.5 क्या है? ये 150 क्या है? 150 कितने में क्या है? लीटर. 150 क्या है? नहीं ये क्या है? ये लीटर. 150 लीटर था. 150 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है आपको तो. हाँ, मिलीलीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब. क्यों? कन्वर्ट किया. ठीक है. Please see there at the whiteboard. All of you please now look at the whiteboard because sufficient time have been given to you.
you are supposed to find out what is the concentration of 150 centimeter cube of 5 gram sodium chloride. समझ गए? 5 ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड लिया था और उसका 150 मिलीलीटर से बना दिया. यही सवाल है ना? 150 मिलीलीटर में 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड था. Meaning thereby that कितने मोल of sodium chloride? You have to find out what is the molar mass of sodium chloride, which is 3 plus. It could be 58.5 gram per mole. अगर मैं कहता हूं 150 मिलीलीटर मेरे पास सोल्यूशन था, 150 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, इट कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम? 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड और कितने मोल? 58.5 gram per mole. This gram, sorry, divide by this. This divided by 5 gram per. This gram and this gram cancels out. That means so many. Okay, that you can do. So many mole in 150 milliliter. What is molarity? Concentration is expressed as molarity in कितने मोल थे एक लीटर में, that is 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल होंगे? That should be 5 by 58 mole into 1000 divided by so many mole per decimeter cube. Please understand it, because very small things we have discussed today, and you have to give a thought, revise whatever has been done. We try to introduce you to the amount of the substance. Amount of the substance is a physical quantity. It has a number and a unit. Unit is MOLE is a word, and MOL is an abbreviation for amount. You studied what is a molar mass. You can now distinguish between molar mass, molecular mass, and relative molecular mass. And invariably, relative molecular mass people have been using as molecular weight. Weight concept is gone because weight is a force. इसलिए molecular weight का term बिल्कुल खत्म हो गया है. Then we discuss, अगर मेरे को ये तीनों terms जो हैं, they are basically the extensive variables. अगर मेरे को intensive variable में express करना है, तो मेरे को concentration define करना है. Concentration is defined in terms of molarity, molality, and mole fraction. Very small things we have done, and I'm sure you can now give me an answer to the question which I asked you in the beginning. How many mole or how much water you will be bringing for me for 5 mole of water? You will bring it there in a glass. And you please remember it. It can't be there in spoon, it can't be there in bucket. But the second question which I asked you initially is, how will you prepare 1 molar solution of oxalic acid, 150 milliliter? Let me explain you that first, and that will be all, which is what we wanted to discuss today. Is the question clear? And this is how you will be going to prepare solution there in laboratory. I don't know how many of you will be going to the lab or not for doing some experiment, but this is the procedure for just going to the lab and try to find out how many grams of oxalic acid you will be weighing. Question is, how many grams of oxalic acid you will weigh oxalic acid's molar mass is 126 ग्राम पर मोल. इसका मैं कितने ग्राम वे करूंगा ऑक्सैलिक एसिड का कि मैं लेट्स से 250 मिलीलीटर 0.2 मोलर सॉल्यूशन मेरे को बनाना है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. 250 मिलीलीटर में कितना ऑक्सैलिक एसिड वे करूं कि मोलरिटी 0.5 बन जाए. इसको समझ लीजिएगा बिकॉज दैट इज द क्रक्स. 0.2 मोलर, ठीक है. मैं कितना वे करूं? अगर मैं कहता हूं कि मैंने 1000 मिलीलीटर लिया है सॉल्यूशन
और मैं अगर 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहता हूं तो कितना वे करूंगा? अगर मेरे को 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाना है 1 मोलर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सिलरी साइड विल बी वेइंग? 1 मोल, and 1 mole is 126 ग्राम. क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, मेरे को कितने ग्राम चाहिए ऑक्सैलिक एसिड वे करूंगा ताकि मेरे पास 250 मिलीलीटर 0.2 मोलर सोल्यूशन बन जाए? तो मैंने कहा अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन बनाता हूं 1 मोलर का, तो कितना वे करना पड़ेगा? जितना मोलर मास है. एंड व्हाट इज द मोलर मास? 126. तो मैं 126 ग्राम वे करूंगा. बट अब मेरे को 1000 नहीं बनाना है, मेरे को कितना बनाना है? 250 अगर मैं बनाता हूं 1 मोलर, तो कितना वे करना पड़ेगा? 126 into 250 divided by so many gram I will have to weigh for 250 milliliter solution of 1 molar concentration. अब मेरे को 1 मोलर नहीं बनाना ना, कितना बनाना है? 0. तो मेरे को कितना वे करना पड़ेगा? 126 into 250 divided by so many gram of oxalic acid I will have to prepare. I will have to go to the lab. और कितना वे करूंगा? इतना. और किस में डिसॉल्व करूंगा? 250 वाली बीकर में. नॉट बीकर, दैट्स कॉल्ड मेजरिंग फ्लास्क. आप मेजरिंग फ्लास्क स्टॉपर वाली होती है, मार्क लगा होता है. आप इतना वे कर लोगे इसमें एंड pour it with the help of a funnel and make the solution till that mark. That mark is given there for 250 milliliter. This is how you should prepare 0.2 molar solution of oxalic acid in the laboratory and 250 milliliter. Is it correct? This is the procedure of preparing a specific concentration of a solution in the laboratory. Now, can I ask a relevant question from this? अगर मैंने in place of oxalic, आपने देखा oxalic acid नहीं, it's like sodium chloride, solid होता है. आप जाइए लैब में सॉलिड वे कर लीजिए. किसमें? वेइंग बॉटल में. वेइंग बॉटल में इतना सॉलिड डालिए, मास निकालिए, उतना ट्रांसफर कर दीजिए. नाउ इफ आई आस्क यू टू प्रिपेयर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ HCl which is available not in solid but is available in, how will you prepare that solution? The question is, how will you prepare a solution of 0.2 molar solution, 250 milliliter of HCl now, which is not available there in solid, which is available only in. How will you prepare this solution? That is the question, and that is all. How will you prepare 0.2 molar solution of HCl, 250 milliliter? HCl is available not as solid, but is available as. देखा कभी HCl? सल्फ्यूरिक एसिड भी देखा होगा घरों में जो सफाई सुफाई करते हैं. आजकल तो हार्पिक यूज करते हैं. आई एम नॉट एन एजेंट ऑफ हार्पिक, मगर वो लिक्विड में सल्फ्यूरिक एसिड होता है. तो HCl is also like that. How will you prepare it? That is what is the question. Quick. सवाल समझ आ गया है? इस बार मेरे पास सॉलिड नहीं है, इस बार मेरे पास, और लिक्विड का मेरे पास मास निकालने का मेथड इजीली नहीं होता है. हो सकता है आप एक एक ड्रॉप डालते रहिए, मास निकाल लीजिए. बट HCl जहां पर लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं तो हम बेसिकली मास नहीं लेते हैं, हम वॉल्यूम लेते हैं. तो उसकी डेंसिटी अगर पता है तो यू कैन फाइंड आउट हाउ मच मास यू विल हैव टू टेक. इज दैट करेक्ट? सो इसके लिए डेंसिटी भी चाहिए होगी. डेंसिटी ऑफ HCl इज 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर. लास्ट में थोड़ा सा टाइम है मेरे पास अभी. आई वुड लाइक टू
know how much you know about stoichiometry. That is my next thing, which we are going to discuss tomorrow in the second, maybe around 3 o'clock. What do you know about stoichiometry? मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर उस रिएक्शन के बारे में आप जानते हो तो बता दीजिए, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा चुप हो जाएंगे. Do you know what is the meaning of this reaction? Please spell it out. What is the meaning of this reaction? Zn2 positive, ब्रैकेट में मैंने aqueous लिखा है. Aqueous सिस्टम में आपने Zn2 पॉजिटिव को स्ट्रक्चर बना लिया, वो ले लिया. मतलब क्या है इस रिएक्शन का? In terms of chemistry language, no, forget about that. It is like this: hydrogen plus chlorine gives you 2HCl. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन will react with, will give you. अब आप आ गए हैं बिल्कुल, बिकॉज अभी तो हमने मोल पढ़ा है, इसीलिए ये वाला है. ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन will react with 1 मोल ऑफ क्लोरीन will give you. ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद बैलेंस कैसे होती है. सिर्फ ये बता दीजिए मेरे को इसका क्या मतलब है. 1 मोल ऑफ Zn2 positive will react with, it should be just 1 mole of Zn2 positive will react with 2 mole of chlorine, electron. 2 mole of electron का मतलब समझ आता है? अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितने करंट पास करूंगा? 96500 कूलम. मींस 1 सेकेंड के लिए 96500 करंट पास करूंगा. देन आई विल बी एबल टू गेट 1 मोल ऑफ. चलिए, थैंक यू वेरी मच. बहुत पेशेंस से आपने सुना है और सवाल करिएगा सॉल्व. इज दैट करेक्ट? एक बार मेरे साथ जाना.